नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आचार्य सर भी शायद है अभी ज्वाइन हो चुके हैं। जी सर। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते संजय सर, नमस्ते। संजय सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? फाइन सर, फाइन, आपके आशीर्वाद सर। नमस्कार सर। अरे अभी आपको आपके आशीर्वाद की जरूरत सबको पड़ती है। अरे नहीं सर, आप सीनियर है, आप गुरुजन है सर। आपको सीनियर आर ऑलवेज सीनियर सर। पूर्वक मैसेज में तो कर दिया था, फोन पे भी बात हो गई थी, पर आप सामने देखे तो आपका मैडम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोग्राम। Yes sir, yes. Good afternoon everyone. A warm welcome in this international web event Nadi Prabodhini, which is organized by Ayush Darpan Foundation, Dehradun, India. So I'm very much glad to see you all, the dignified personalities over here. So before starting the session, we will like to play the Dharmantari Vandana. So I'm just sharing the Dharmantari Vandana. Afterwards, we will continue with this Nadi Prabodhini, which will be there on this 9th, 10th and 11th April 2022. So welcome you again, once again. Namaskar, Suswagatam. शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। After this Dhanvantari Vandana, I would like to invite Dr. Naveen Chandra Joshi sir, who is the founder of this Ayush Darpan Foundation, Dehradun. Dr. Joshi sir, will you please introduce about the Ayush Darpan Foundation? Yes, thank you, Madam Shilpa Ermeji. As you all know, that Ayush Darpan Foundation is a trust, and it is an organization which is propagating the Ayurveda from last 10 years, and we are organizing many previously also during the COVID era, as well as after COVID. We are organizing different events, offline as well as online events. Previously, we also organized a mega webinar on Nadi, and this is also a Nadi Prabodhini, the international web event in which many of the dignitaries as well as the many participants will present their lectures. Ayush Darpan Foundation Trust is organizing this event, and the whole of the papers also will be published in the Ayush Darpan e-health magazine. So a magazine is also running under this platform, as well as the web portal ayushdarpan.com and .org. So I hope that the participants also participate maximum, and they will present their papers within the time limit through this program. Thank you, Dr. Silpaji. Thank you, sir.
It will be just like I think कि सभी प्रकार से लाइक हमने जो भी डिजाइन किया है इस प्रोग्राम को, तो प्राचीन से लेकर आधुनिक यानी अर्वाचीन विद द टेक्नोलॉजी। तो इस इन 3 दिनों में हम लोग सभी प्रकार से नाड़ी परीक्षा को लेकर, जैसे कि यहाँ पे सभी उपस्थित नाड़ी वैद्य है, लाइक डॉक्टर जोशी सर इज देयर, डॉक्टर संजय सर इज देयर, ऑल द डिग्निटरीज आर देयर who are there working in the field of this नाड़ी परीक्षा since last almost about 25 years। तो ये इवेंट एक प्रकार से जैसे आपने बताया कि दूसरा इवेंट है। नाड़ी परीक्षा एक प्राचीन परीक्षा है, आचार्यों ने योग रत्नाकर, भाव प्रकाश एवं जैसे कि बसवराजियम, ऐसे सारे ग्रंथों में नाड़ी परीक्षा का वर्णन तो किया है। हम लोग काफी दिनों से नाड़ी परीक्षा को पढ़ाते भी है, बट स्टिल इस विद्या का और प्रचार प्रसार हो इसी हेतु से और सभी प्रकार से लाइक पेपर प्रेजेंटेशंस है, एक्सपर्टाइज, कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सेशंस है, तो सभी प्रकार से एक भला बुरा it is like a knowledge feast for all of us, all the stalwarts of Ayurveda fraternity who are watching this show from the globe of the India. So I welcome once again all the dignified personalities, and I would like to invite Nadi Guru Acharya Sanjay Kumar Chajet sir for the welcome note. रागादिरोगान् सततानुसक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिजान जंगान् यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। Respected Ravi Narayan Acharya sir, respected Professor Naveen Chandra Joshi ji, respected Dr. Shilpa ji, respected Dr. Patankar ji, and all the dignitaries who are present for this event. Nadi alias pulse diagnosis is a subject to my heart. I am teaching it for last 30 years now, researching it almost for the same period or for a couple of more years. This lockdown has provided an opportunity for all of us with the leadership of Professor Naveen Chandra Joshi ji to invite the guests across the globe, and we had a mega webinar under the auspice of Ayush Darpan Foundation, international webinar on Nadi Pariksha. Probably the first ever event which went for 13 hours non-stop. Thereafter, there was a trickle of more activities coming out from different quarters of India, and many people started pouring their knowledge about Nadi Pariksha on virtual media and of course on the lectures and webinars and workshops. I am really glad that Naveen sir has once again conceptualized and took all of us together to make a unique program. I am using the word unique program. Reason is very simple. It starts from the most ancient systems of Nadi Pariksha to the latest advances of wearables and applications. This entire scenario is definitely going to be of immense importance for those who want to know about Nadi, who are working in the field of Nadi, and those Ayurveda students and doctors who want to practice Nadi Pariksha. I am sure that there are misconceptions about Nadi Pariksha. Nadi Pariksha has its beginning, which is observed since the Vedic era. Rigveda has the initial inscription saying Iyam Aha Dhammate Sannadi. And thereafter, Charaka has an elaborate understanding about the specific reasoning and the rules for methodology of pulse diagnosis under the name Sparsha Vigyanam. Though the Nadi Pariksha first appears in the classical text called Sharangdar Sahita, and thereafter there are multiple texts
about Nadi Pariksha. I'm sure with the program like Nadi Prabodhini, we are going to have the feast of knowledge from different quarters. We have many speakers going to express their experiences and understanding about Nadi Pariksha, may it be from the traditional angle or may it be from the technological angle. And with these words, I don't want to be intermingling more between our esteemed speakers and the audience. So with this, I rest my words. Jai Dhanvantari, Jai Nadi Pariksha. Thank you, sir. Thank you. I just remember the words by APJ Abdul Kalam, sir. All birds find shelter. All birds find shelter during the rain, but eagle avoids rain. But eagle avoids rain by flying above the clouds, With these words, I would like to invite Dr. Joshi, sir, for introducing our today's guest of honor, Mr. Acharya, sir. Thank you, Dr. Shilpa ji. Vaidya Ravindra Narayan Acharya, born on 26 February 1967, is a professor of Dravyaguna at ITRA Jamnagar, where he has been a faculty since 2007 and currently working HOD Dravyaguna and Dean in the same institute. Professor Acharya completed his PG in 1996, PhD in 2002 from Gujarat Ayurveda University Jamnagar, and his undergraduate degrees, BSc Botany Honours in 1986 and BMS in 1993 from Utkal University, Bhubaneswar, Odisha, and PG Diploma in Bioethics from IGNOU, New Delhi in 2015. He is having more than 26 years of teaching and research experience in the various fields of drug research. Professor Acharya has published more than 300 research articles in peer-reviewed journals, more than 13 seminar proceedings, authored 5 books and contributed 5 chapters to his credit. He has served IGNOU as a course writer and WHO as a temporary advisor. Professor Acharya also currently providing his services to the Ministry of Ayush, Government of India at different capacities such as Chairman APC, Member ASU DTAB, Member Scientific Advisory Group for Drug Development CCRS, Member Project Screening Committee of NMPB, Coordinator IPVC. Professor Acharya has worked as principal investigator in more than 10 research grant projects funded by national agencies, and under his guidance, 31 PhDs, 51 postgraduate theses, dissertations, and Dravyaguna have been awarded. Professor Acharya is the recipient of the Best Teacher Award for Drug Research Teaching and the Best Research Paper Award on Literary Research in the field of Ayurveda by CCRS, Ministry of Ayush, Government of India, and under his guidance, for these 3 essays and 2 research articles got national level awards. He represented India in 5 different countries in various capacities, including the WHO meeting on herb-drug interaction at Beijing and pharmacovigilance at Geneva. So welcome, sir. Welcome in this program, the Nadi Prabodhini. Thank you, Dr. Joshi, for your detailed introduction. Jai Dhanvantari, at the outset, I offer my regards to the esteemed senior person, Professor Dr. Sanjay ji, and my regards to Dr. Shilpa, Dr. Patanka, Dr. Madan, and all dignitaries, all research scientists, those who are going to present paper. But I came to know from this program that there are near about 13 sessions where various experts, more than 15 experts, are going to deliver their experience or importance or the various related topics to Nadi Pariksha. And I thank Dr. Ayudarpan Foundation for inviting me for this program. And this is the first web program I am addressing after joining as Director General of CCRS. And as regards being a scholar of science and being a student of this research, particularly research-based activities, I always
prefer that our science, Ayurveda, which is the most ancient science, must be updated and must be presented in form of so that the other communities can understand our methods, our diagnostic methods, and our the way of diagnosis in a scientific way. And I thank that I thank the Nadidarpan Foundation, sorry, Ayurveda Foundation for this type of dedicated work. Very few organizations are working this type of dedicated and scientific activities based on for validating Ayurveda, ancient Ayurveda in the modern terms. I know the research persons, like Professor Madan and Professor Dr. Sanjay ji, who is also working and dedicatedly for this, how to establish the Nadi Pariksha among the students fraternity. I have seen his, I've heard his lecture at Jamnagar, and he's a product of proud alumni of Jamnagar School of Thought of Ayurveda, and he's doing all these activities, and various different other other persons are also involved in this type of activities. When I was a student of Gopavandhu Ayurveda Mahavidyalaya Puri, I have come across my guru, Professor Achyutananda Patti, which is supposed to be a Nadi Vijan expert. Now he's no, he was one of the profound Nadi Vaidya, and was invited and was in foreign for many times by various capacities for Nadi examination. I have seen his capacity, how he diagnosed in the OPD in front of us, and asked the even if the patients what they ate, what are their activities, how they what the conditions, why they have falling ill. He explained them in a very meticulous way. Even if when we go to the office chamber also, he just handle the pulse of any person and can tell that yes, these are the disease conditions, these are the things you are happening, and if you avoid this or you take this type of medications, you will be. So by this is an amazing way of diagnosis, and also how being a Vaidya, we can one can take a faithful, we take a what I can say that he can convince the patient that he is the master of the treatment protocol, treatment procedure, for which he is known or she is known. So we need, but this is not going in this today's era. This is not going to, because it is always an experience based. A person, how he or she is experienced for the diet, it totally depend upon experience based things. So if so the Vaidyas, those are the experts, those who are imparting this type of knowledge to the trainees. I think so many students so are not aware, because due to this even if many teachers, I mean he may be a part of, he may be a faculty of Kai Chikitsa, or he may be a faculty of Nidana, but many of us are not well versed with this diagnostic method of Nadi, and the way this symposium is being organized, and there are near about 13 sessions, as Sanjay ji has rightly told. There are 13 hours, a huge 13 hours Nadi, exclusively dedicated scientific sessions for Nadi examination, 3 days consecutively, and there are 13 sessions, and near about 18. And also now the students are coming up, now the scientists are coming up for the paper presentation. This is a good sign that yes, there are 18 paper presentations on Nadi, on exclusively on Nadi. So this shows that the interest of the young scientists, or those who are doing the practice, doing the in Ayurvedic practice for Nadi. So I hope this today's this 3-day workshop will definitely helpful to the Ayurveda practitioners, and I wish all the best for the Nadi Pariksha sessions. And again, I thank the organizer for giving me the opportunity to speak at in the inaugural session.
function. Thank you all. Thank you, sir. We start the day on this platform, Ayush Darpan platform. We start the day by 6 a.m. sir, early morning. Sangeeta sessions are there, and we end by 10 p.m. There are many sessions during the daytime. Various speakers are there. Mostly, we organize all type of sessions, just like this Nadi Prabodhini. We have organized, I think, about 400 to 500 webinars are there from last 2 years only. So, sir, congratulations on becoming a Director General CCRS, and we are looking forward for your cooperation, and we'll look forward with any type of webinar or any type of conference with the cooperation of this CCRS department. So thank you, sir. Thank you for your presence and your time, sir. Thank you very much. So with the first session, we are here with the various session just now, sir told. Now I would like to invite Dr. Lagwankar sir, Dr. Lakshman Lagwankar sir, with his topic. But before that, I would like to invite Dr. Joshi sir for introducing Dr. Lakshman Lagwankar sir from Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune, Maharashtra. Thank you, Dr. Silpa ji. Vaidya Lakshman Chandrakant Lagwankar, PhD, MD, PhD scholar in Sharir Kriya, as well as the MD in Sharir Kriya. 6th generation from oldest Ayurvedic tradition, Vaidya in Pune, consulting Ayurvedic physician since last 17 years, panel consultant, Punarvasu Ayurved Chikitsalaya Pune, Nidan, Nadi Darshan, Arishta Chikitsa, Yakrita Vikara, Vrika Vikara, Hridaya, Madhumeh, general practice are the specialties. Associate Professor, Tilak Ayurvedic Mahavidyalaya since 7 years and 8 months. Assistant Professor, various capacity, various he lectures delivered in different platforms. So many lectures, so many articles published, and awards, sub-awards like BSDTs of Ayurveda College Bagoli, best outgoing student, first prize in paper presentation, first prize in best paper presentation in national level seminar, as well as honorable visiting consultant at Sassoon General Hospital, director of Lincoln Ayurvedic Private Limited, Pune. Extracurricular activities also, he has so many hobbies. I welcome to you, Vaidya Lakshman Lagwankar ji. मैडम, एक पहला जो सेशन है ना, ये पारंपरिक जो एक वैद्य परंपरा है, डॉक्टर लागवनकर सर बिलोंग्स टू द वैद्य परंपरा. उनके सारे जो भी मतलब ये थे ना पूरे, तो वो एक प्रकार से ये एक अलग सेशन है. तो वेलकम डॉक्टर लागवनकर सर. यू कैन शेयर योर स्क्रीन ऑल्सो. उनको को-होस्ट बना दीजिए मैम. हाँ, किया है सर. थैंक यू मैडम. हेलो. यस सर, ऑडिबल है और मतलब स्क्रीन भी विजिबल है. यू कैन कंटिन्यू. हाँ, ठीक है. रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहान् रतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. नमस्कार. सबसे पहले मैं वैद्य शिल्पा यर्मे मैडम और उनके सभी सहकारीगण और आयुष दर्पण फाउंडेशन, जिन्होंने ये नाड़ी परीक्षा के ऊपर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए उनका सभी का अभिनंदन करता हूं. और मैं आभार प्रदर्शित भी करता हूं कि मेरे जैसे एक यंग वैद्य को आपने नाड़ी परीक्षा जैसे कठिन विषय के ऊपर मेरा मत
प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया। तो धन्यवाद मैडम। अब जैसा कि आज का विषय है कि परंपरागत नाड़ी परीक्षा, तो थोड़ा सा नाड़ी परीक्षा के इतिहास में हमें जाना चाहिए। नाड़ी परीक्षा का उल्लेख वैसे तो हम बृहत्त्रयी में कहाँ पे नाड़ी परीक्षा का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन लघुत्रयी में नाड़ी परीक्षा का उल्लेख मिलता है। साथ ही अलग अलग कणादकृत नाड़ी परीक्षा में मिलता है, रावणकृत संहिता में मिलता है, इन जगह पे नाड़ी परीक्षा का उल्लेख मिलता है। तो वहां पे अष्टविध परीक्षा की विधि जहाँ पे आई है, उसमें नाड़ी परीक्षा का स्थान अग्र रूप से कहा गया है। गदाक्रांतस्य देहस्य स्थानानि अष्टौ परीक्षयेत्, नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा शब्द स्पर्शम दृकाकृति। तो इस तरह से अष्टविध परीक्षा का एक भाव के रूप में नाड़ी परीक्षा का उल्लेख आया है। अब कुछ लोगों के मत से नाड़ी परीक्षा को महत्व देना चाहिए, कुछ लोगों को के मत से नाड़ी परीक्षा को महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे सौभाग्य से मैं उस परंपरा से वैद्य हूँ जिसमें नाड़ी परीक्षा और अरिष्ट विज्ञान हमारी परंपरा के दो महत्वपूर्ण विषय है। कि केवल नाड़ी परीक्षा से ही निदान करने की प्रवृत्ति और ज्यादा से ज्यादा रुग्णों में अरिष्टों का निदान करने की भी प्रवृत्ति, इस तरह का अभ्यास हमारी परंपरा में लगभग 6-7 जनरेशन से चल रहा है। इसलिए मैं बहुत सौभाग्यपूर्ण हूँ कि उसका अवसर भी मुझे मिला है और उसमें से थोड़ी बहुत चीजें जो मैं सीख पाया हूँ वो आपके सामने रखने का आज अवसर मुझे प्रदान हुआ है। तो जो परंपरा का ज्ञान है उसके लिए मैं थोड़ा एक विषय आपके सामने परंपरा के बारे में रखना चाहता हूँ कि क्योंकि बृहत्त्रयी में नाड़ी परीक्षा का यह विषय नहीं आया है, तो इसके संदर्भ में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि सच में नाड़ी परीक्षा यह शास्त्र है या कुछ ऐसे ही आया हुआ सिद्धि रूप का विषय है। लेकिन नाड़ी तो सच में शास्त्र रूप आया हुआ है। रावणकृत संहिता उसके लिए नाड़ी परीक्षा का वर्णन आया हुआ है, कणादकृत नाड़ी संहिता का वर्णन आया हुआ है, योगेश्वरकृत नाड़ी संहिता में अलग अलग रेफरेंसेस आए हुए हैं। साथ ही हमारे शारंगधर संहिता में, योग रत्नाकर में, ऐसे लघुत्रयी में और आगे के ग्रंथों में उनका वर्णन आया हुआ है। तो शास्त्र में जब एक चीज होती है तो वो हम लोग पढ़ा सकते हैं और पढ़ाने के बाद वो आत्मसात भी कर सकते हैं और आत्मसात करने के बाद किसी दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं और दोनों का परीक्षण एक हो सकता है। इस तरह का अनुभव आना नाड़ी परीक्षा के लिए अवश्यपूर्ण है, शास्त्र के लिए अवश्यपूर्ण है। तो एक परंपरा का ही उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आगे जाता हूँ। मेरे दादाजी और उनके भाई दोनों भी वैद्य थे और दोनों भी नाड़ी परीक्षा ही करते थे। तो एक दिन मेरे दादाजी किसी रुग्ण को उनके घर को चेक करने के लिए गए थे और चेक करके आने के बाद उनके भाई ने उनसे पूछा कि आपको उनकी नाड़ी कैसे लगी। तो उन्होंने जो अरिष्ट रूप नाड़ी का वर्णन है उसमें से कुछ रेफरेंस का वर्णन उनके सामने रखा कि मंदम मंदम शिथिल शिथिलम व्याकुलम व्याकुलम वा, मतलब थोड़ी लग रही थी नाड़ी, कभी कभी लग रही थी, कभी छूट रही थी, बीच में अचानक से स्पष्ट हो रही थी, बीच में अचानक से नहीं लग रही थी, इस तरह की नाड़ी लग रही थी। तो इतनी सी बात सुनने के बाद उनके भाई ने उनको कहा, हाँ तो मतलब आपने तो उनको उनका अरिष्ट भी बताया होगा और इतने दिन के वो मेहमान है, इस तरह से भी आपने बताया होगा। तो ये जो दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास था और नाड़ी के ऊपर विश्वास था जो कि शास्त्र रूप में था, मतलब जो कुछ भी शास्त्र में था वो दोनों ने एक ही जैसे आत्मसात किया था और उनका परीक्षण वो कर पा रहे थे। तो एक तो परंपरा की पुण्याई है जिसकी वजह से वो मिला है और साथ में शास्त्र में जो है वो सीखने के लिए मिलता है, इसका यह एक उदाहरण रूप से है। तो नाड़ी परीक्षा के शास्त्र में कौन कौन स्थान आए हैं, तो मणिबंध के समीप जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम जीव साक्षी नाड़ी के रूप में देखते हैं, अंगुष्ठ मूल के नीचे एक अंगुल छोड़कर वो उसका परीक्षण करते हैं। उसके साथ साथ अंतर्गुल्फ, कंठमूल, नासामूल, नेत्र, कर्णमूल, जिह्वा एवं लिंग। अब इसमें से अंतर्गुल्फ और कंठ की जो नाड़ियां है, मैंने मेरे पिताजी से उसके बारे में सीखा है कि जब हमें अरिष्ट सूचक नाड़ियों का निदान करना हो या अरिष्ट सूचक लक्षणों का निदान करना हो, तब मणिबंध संधि की नाड़ी के साथ साथ इन दोनों की जगह का के भी नाड़ी का परीक्षण करो तो आप
एक्यूरेटली या ज्यादा अच्छी तरह से अरिष्ट सूचक नाड़ी का लक्षण रूप आप निदान कर पाओगे। थोड़ा इसका लॉजिकल विचार करने के बाद एक तो पेरिफेरल सर्कुलेशन भी आप चेक कीजिए, साथ में कैरोटिड जो सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है उसका भी परीक्षण करके कीजिए। अगर उस नाड़ी के यहाँ पे आपको मंदम मंदम शिथिल शिथिलम व्याकुलम व्याकुलम वा इस तरह की नाड़ी लग रही है तो वो निश्चित रूप से अरिष्ट स्वरूप या जल्दी मृत्यु सूचक लक्षणों के ऊपर लेके जाने वाली नाड़ी है। आगे चलते हैं। अब नाड़ी मणिबंध स्थान की प्रधानता यहाँ पे उल्लेखित है। अस्थि प्रकोष्ठका नाड़ी मध्य कापी समाश्रिता जीव नाड़ी इति प्रोक्ता नंदिना तत्ववेदिना। अब नंदी स्वयं जो कि भगवान शंकर के वाहन के स्वरूप थे, जिनसे ही रावण ने नाड़ी परीक्षा सीखी और उसके बाद रावणकृत नाड़ी विज्ञान यह ग्रंथ लिखा, तो उन्होंने ही उसको अंगुष्ठ मूल प्रदेश के पूर्व में रहने वाली जो नाड़ी है उसको जीव साक्षी या प्राधान्य रूप से नाड़ी के लिए वर्णन किया है। अब इसके भी कुछ हम लोग लॉजिकल रीजन, मेरा स्वभाव ऐसा है बचपन से परंपरागत वैद्य होने के बाद भी मेरे पिताजी की आदत ज्यादा कुछ पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन उनको मैं कुछ ना कुछ प्रश्न पूछकर टोकता रहता था। तो वो कहते थे कि नहीं, खुद पढ़ो, खुद उसमें विचार करो और विचार करके आप उसमें से कुछ शास्त्र का उपग्रहण करने की कोशिश करो। तो मैं यह सोचता था कि ऐसा क्यों है। तो बाकी के सातों स्थानों का अगर आप विचार करेंगे तो नाड़ी परीक्षा के लिए हम लोग तीनों उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों का उपयोग करते हैं और तीनों का उपयोग करके जो परीक्षण करते हैं तो परीक्षण करते वक्त रुग्ण भी कंफर्टेबल होना चाहिए और हमें भी अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए मैं भी मणिबंध की जो नाड़ी है वो प्राधान्य रूप से हम देख सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि नासा के नीचे होठों के ऊपर थोड़ा परीक्षण करना, तीन उंगलियां रख पाना, उससे पूरी तरह से ज्ञान होना, ये डिफिकल्ट चीज है। वैसे ही नेत्र की जो नाड़ी है वो आंखों के ऊपर भ्रूण के नीचे, वहां पे भी हम अगर उंगली रखेंगे तो रुग्ण अस्वस्थ हो जाएगा और रुग्ण अगर अस्वस्थ हो जाएगा तो हमें अच्छी रूप से नाड़ी का निदान नहीं हो सकता। वैसे अगर पैर के प्रदेश की हम लोग नाड़ी का परीक्षण करें, हाँ वहां तो हम लोग तीनों उंगलियां अच्छी तरह से रख सकते हैं, लेकिन रुग्ण को ऐसा लगेगा कि हाँ वैद्य हमारे पैर क्यों पड़ रहा है, तो वो अलग रूप से हमारे सांस्कृतिक अवमूल्यन होने की आशंका की वजह से फिर से रुग्ण के मन में कुछ अलग भाव उत्पन्न होते हैं और उन अलग भावों का असर भी उसके नाड़ी में हो जाता है और हमें सही ज्ञान नहीं होता है। इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ऐसा मत है कि मणिबंध स्थान को उस वजह से प्रधानता दी होगी कि वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, रुग्ण कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं, हम लोग उनको अच्छी तरह से परीक्षण कर सकते हैं और परीक्षण करके हम अच्छी तरह से नाड़ी परीक्षा से अच्छे निदान तक हम लोग पहुंच सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। अब परंपरागत नाड़ी के बारे में जो मैंने पहले रखा कि नाड़ी परीक्षा यह क्या है, तो इसके लिए हमारे परीक्षा में परंपरा में मेरे पिताजी हमेशा 3 शब्दों का उपयोग उसके लिए करते थे। एक तो नाड़ी परीक्षा यह शास्त्र है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में उसका वर्णन है और जो ग्रंथों में वर्णन आता है हम सबको पता है कि जो सिद्धांत के रूप में प्रस्थापित हुए हैं, मतलब परीक्षकैः ही बहुविधम परीक्षा हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णया तक जो चीजें गई हुई है वही चीजें सिद्धांतों के रूप में ग्रंथ में आई हुई है। इसलिए नाड़ी परीक्षा के ऊपर अच्छा ग्रंथ में वर्णन है, तो इसलिए वह शास्त्र है। दूसरा वह कला है। कला क्यों है? क्योंकि वो आर्ट है। हमें वो देखने की विधि बताई गई है, कहाँ पे देखना है वो बताया गया है, कैसे देखना है वो बताया गया है, लेकिन उसको समझना कि वो जैसे मुझे लग रही है वैसे ही मेरे स्टूडेंट को लगे, वैसे ही तीसरे व्यक्ति को लगे, वैसे ही चौथे व्यक्ति को लगे, ये थोड़ी कला है। जैसे हम किसी वाद्य को बजाने की कोशिश करते हैं तो वाद्य को बजाते वक्त उसके सुर हमें उनकी थ्योरी पता है, लेकिन वो सुर या वो ताल वाद्य जो होते हैं उनसे वैसे ध्वनि को निकालना यह एक आर्ट है, वो कला है, वो प्रैक्टिस से आत्मसात होती है। तो इसलिए ये कला भी है। हमें हर रोज नाड़ी परीक्षण करना चाहिए, हमारा खुद का करना चाहिए, हमारे आजू बाजू में जो स्वस्थ व्यक्ति है उनका नाड़ी परीक्षण करना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम लोग नाड़ी परीक्षण करेंगे उतनी हमें वो कला शायद अवगत होगी। इसलिए नाड़ी परीक्षण यह कला है। और तीसरी चीज जो थोड़ी सी इन दोनों में से अलग है वो है नाड़ी परीक्षा एक सिद्धि भी है, क्योंकि हमें वो कला आत्मसात होने के बाद भी
कभी कभार हम लोग निदान के तरफ नहीं पहुंच पाते, कभी कभार पहुंच पाते हैं, तो इसलिए एक अलग रूप से सिद्धि भी है और जिसके लिए थोड़ी उपासना का भी की आवश्यकता होती है, साथ साथ गुरु के आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है। और आप परंपरा से हो तो वो हम लोग कहते हैं ना कि खुद में ही वो आयुर्वेद आ जाता है, तो इस तरह से वो भी अगर हो तो उसकी भी साथ मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास सिद्धि नहीं है तो आप शास्त्र या कला के तौर पर नाड़ी परीक्षा नहीं कर सकते। आप जरूर नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, नाड़ी परीक्षा सीख सकते हैं और नाड़ी परीक्षा सीख कर अपने निदान तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। अब इस नाड़ी परीक्षा में एक चीज मुझे जो भावित हुई है, या नाड़ी परीक्षा द्वारा जो निदान हम लोग कर सकते हैं, उसके पीछे लॉजिकल रीजन कुछ है क्या? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो उस ग्रंथ के संदर्भ में हमें समझना चाहिए कि उसी का आधार के साथ हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। तो जब मैं सोचता था कि नाड़ी परीक्षा से हम लोग क्या फील करते हैं, तो हम लोग फील करते हैं स्पंदन। स्पंदन किसके फील करते हैं? जो कि रक्त के स्पंदन हम लोग फील करते हैं। रक्त के गुणों के बारे में, पांचभौतिक गुणों के बारे में हमें पता है, विश्रता, द्रवता, राग, स्पंदन, लघुता तथा। तो हम स्पंदनों का परीक्षण हम लोग करते हैं। अब रक्त ही ऐसा शरीर का धातु है जो पूरे शरीर में वहन हो रहा है और उसमें से ही तीनों दोषों का वहन पूर्ण शरीर में हो रहा है। तो रक्त ही यह माध्यम है जो कि तीनों दोषों का वहन शरीर में कर रहा है। इसीलिए शिराओं के प्रकारों में भी वातवह शिरा, पित्तवह शिरा, कफवह शिरा, इस तरह के शिराओं के प्रकारों का वर्णन आया है। तो जिस माध्यम से हमें दोषों का परीक्षण कर सके, साथ ही व्याधि या हेतुओं की तरफ निदान तक हम लोग पहुंच सके, तो उसका माध्यम ही स्वयं रक्त है। इसलिए नाड़ी परीक्षा हम लोग अंगुष्ठ मूल के नीचे, मणिबंध संधि के नीचे रक्तवाहिनी के ऊपर ही करते हैं। और यही नाड़ी परीक्षा के पीछे का लॉजिक है कि नाड़ी परीक्षा के द्वारा निदान करने का चांस कितना है, या नाड़ी परीक्षा के द्वारा सच में निदान हो सकता है क्या नहीं है। क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स हमारे सामने आते हैं। नाड़ी तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि हाँ, नाड़ी द्वारा कुछ निदान नहीं होता, कुछ लोग तो कहते हैं पूरी तरह से निदान होता है। तो इन दोनों में जो कुछ भी अंतर है, तो वो यह अंतर है कि हाँ, नाड़ी परीक्षा द्वारा जरूर निदान हो सकता है, लेकिन वो शास्त्र, कला और सिद्धि के माध्यम से हमें आत्मसात करना पड़ेगा। हमें उसकी उतनी बढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके ऊपर उतना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम उसमें अच्छी रूप से प्रावीण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब नाड़ी परीक्षा की जो विधि है वो मैं थोड़ी सी शॉर्ट में आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये ग्रंथ में ही आई हुई है और उसके आगे के मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आज आपके सामने रखने में। नाड़ी के दोषों की गति हम लोग कैसे समझे, और साथ में अलग अलग व्याधियों के नाड़ियों का जो वर्णन है वो संप्राप्ति के अनुसार समझकर नाड़ी को में कैसे इंटरप्रेट करें, और नाड़ी के स्पंदन से हम व्याधियों का ज्ञान कैसे करें, इस तरफ लेके जाने का थोड़ा सा उद्देश्य मेरा आज के लेक्चर का है। इसलिए ये विधि मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। नाड़ीम अंगुष्ठ मूलात अधः स्पृशेत दक्षिणगे करे, ज्ञानार्थम रोगिणो वैद्यो निज दक्षिण पाणिना, स्थिर चित्तः प्रशांतात्मा मनसा च विशारदः, स्पृशेत अंगुलिभिः नाड़ीम जानीयात् दक्षिणे करे, प्रायस्फुटा भवति वाम करे वधूनां, पुंसां च दक्षिण करे तदीयं परीक्षा, ईशत् विनमिताकारं विततांगुलिकं, बाहुप्रसार्थं रहितं परिपीडनेन, ईशत् विनम्र कृतकर्पूर वाम भागे, हस्ते प्रसारित सदांगुली संधिके च, अंगुष्ठमूलं परिपश्चिम भाग मध्ये, प्रभात समये प्रहरं परीक्ष, वारत्रयं परीक्षेत् धृत्वा विमोचयेत्, विमृश्य बहुध्या बुद्ध्या रोग व्यक्ति विनिर्दिशेत्, अंगुली तृतीये स्पृष्ट्वा क्रमात् दोषं त्रयोद्भवं, मंदां मध्यमां गतिम तीक्ष्णां त्रिभिर्दोषेस्तु या लक्ष्येत। अब ये सब चीजें जो है हम लोग जब नाड़ी परीक्षा करते हैं, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से हमारे मन में संकल्प होना चाहिए कि नाड़ी परीक्षा की विधि से ही मुझे निदान करना है, और नाड़ी परीक्षा मैं उतनी एकाग्रता से करने वाला हूं। तो उसके बाद हमें ये विधि फॉलो करनी चाहिए कि हमारे दक्षिण हस्त से रुग्ण के दक्षिण हस्त की हमें नाड़ी परीक्षा करनी है। उसके पहले हमारे वाम हस्त से उसके दक्षिण कर्पूर संधि के नीचे हमें सपोर्ट देना चाहिए, और सपोर्ट देने के बाद सुखासन में उसको बिठाकर हमें नाड़ी परीक्षा करनी है। कैसे करनी है?
स्थिरचित्तः प्रशांतात्मा मनसा च विशारदः। हम अत्यंत शांत हमारा मन होना चाहिए, हमारा आत्मा स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, तभी हम उसका निदान कर पाएंगे। क्योंकि सूक्ष्म रूप से जो जो चीजें हमें हम लोग समझने वाले हैं कि वात पित्त कफ का वहन हो रहा है, वह वहन संपूर्ण शरीर में हो रहा है, हर एक अवयव में हो रहा है, और हर एक अवयव में होकर हम उसका स्पंदन नाड़ियों के द्वारा फील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ कुछ बार ऐसे लगता है कि नाड़ी परीक्षा से हम लोग चमत्कार कर रहे हैं। मैंने मेरे पिताजी के समय की एक कथा मैंने देखा था, उनका नाड़ी परीक्षण। एक रुग्ण का उन्होंने नाड़ी परीक्षण किया और उसको पूछा कि आपको किसी चूहे ने काटा था क्या 10-15 साल पहले। अब ये जो चीज है, ये तो मैं सच में कह सकता हूं कि ये तो सिद्धि का ही भाग है, ये समझना काफी कठिन है। लेकिन शास्त्र में जो कुछ भी कहा हुआ है, जैसे अगर द्वितीय अंगुली के नीचे हमें नाड़ी का स्पंदन लग रहा है, थोड़ा सा उष्ण लग रहा है और थोड़ा सा तीक्ष्ण भी लग रहा है, तो आप लोग अगर ज्वर के लक्षण जैसा उसमें प्रतीत न हो तो आप उसको पूछ सकते हो कि आपने कुछ पित्तकर आहार विहार खाया है का। अगर वो उसने लिया होगा तो वो सच में हमें बता देता है कि हाँ हमने खाया है, तो उसका परीक्षण हम लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन हमें हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, हम स्थिर चित्त होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें निदान होने वाला है, और उस निदान के लिए हम लोग यह नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं। उसके आगे जो वर्णन आया है वो है प्राय स्फुटा भवति वाम करे वधूनाम पूंसाम च दक्षिण करे तदीयम परीक्षा। अब पुरुष रुग्णों के दाहिने हाथ का परीक्षण करना है और स्त्री रुग्णों के बाएं हाथ का परीक्षण करना है। अब इसके पीछे जो शास्त्रोक्त कारण होगा वो पूरी तरह से मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। लेकिन अगर दोनों के दोनों हाथों का परीक्षण अगर हम लोग करते हैं, मतलब पुरुषों के दक्षिण एवं वाम हस्त का परीक्षण और स्त्रियों के भी वाम एवं दक्षिण हस्त का परीक्षण, तो आपको परीक्षण करने के बाद जरूर यह महसूस होगा कि दोनों नाड़ियों में थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो इसका एक रीजन, जैसे शिव के रूप में अर्धनारी नटेश्वर रूप हम लोग देखते हैं, तो उसमें दाहिने तरफ शिव का रूप है और बाएं तरफ पार्वती का रूप है। तो वाम भाग यह स्त्री के लिए बताया गया है और दक्षिण भाग यह पुरुष के लिए बताया गया है। तो इस तरह से दक्षिण प्रदेश में पुरुषों की नाड़ी ज्यादा व्यक्त हो सकती है और वाम प्रदेश में स्त्रियों की नाड़ी ज्यादा व्यक्त हो सकती है। इस तरह का मेरा अनुमान है और वह अनुमान उसमें प्रतीत होता है, इस तरह का भाव में बता सकता हूँ। लेकिन जब हम लोग सीखते हैं तो सीखते वक्त दोनों हाथों का परीक्षण करना चाहिए। दोनों हाथों का परीक्षण करके हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ फर्क आ रहा है या नहीं है, तभी हम बता पाएंगे कि हाँ सच में फर्क आ रहा है या नहीं है। वैसे ही ऊपर के जो लाइन में आया है कि निज दक्षिण पाणिना, खुद के दाहिने हस्त से ही परीक्षण करना चाहिए, तो उसमें भी मेरा मत थोड़ा सा अलग है। अगर कोई वैद्य लेफ्टी है, लेफ्ट हैंडेड है, तो उसके बाएं हाथ में ज्यादा बल होगा, ज्यादा उसका हाथ वो सेंसिटिव होगा, तो वो अपने बाएं हाथ से भी परीक्षण कर सकता है और उतना अच्छा परीक्षण भी कर सकता है। उसके लिए उसको उसका सराव करना चाहिए, उसका प्रयास अच्छी तरह से करना चाहिए। उसके बाद आगे जो आया है, ईशत विनमिताकारम विततांगुलिकम बाहु प्रसारार्थम रहितम परिपीडनेन, थोड़ा सा उसके कर्पूर संधि में सपोर्ट करके थोड़ा सा हस्त मोल्ड करके हम लोग वो परीक्षण करना चाहिए। ईशत विनम्र कृत कर्पूर वाम भागे हस्ते प्रसारित सदांगुली संधिके च अंगुष्ठ मूलम परिपश्चिम भाग मध्य नाड़ी प्रभात समय प्रहरम परीक्षा। अब यह नाड़ी परीक्षा कब करनी चाहिए? प्रभात समय प्रहरम, दिन के पहले प्रहर में करनी चाहिए। अब आजकल के वैद्यों का टाइमिंग ही ऐसा हो चुका है कि हम लोग सुबह 10 बजे के बाद अपना क्लिनिक खोलते हैं या शाम को 6 बजे के बाद करते हैं। तो ये जो बताया गया है कि प्रभात समय, दिन के पहले प्रहर में, जब उसका मन शांत हो, उसके अग्नि का प्रभाव सम हो, तब उनका अगर परीक्षण करेंगे तो उस समय में सबसे अच्छा नाड़ी परीक्षण हो सकता है। इसलिए प्रभात समय पहले प्रहर में उसको करने के लिए कहा है। आज भी किसी रुग्ण में, मेरे भी क्लिनिक का टाइमिंग अलग ही है, 10 से लेकर ही 12:30 या 1 बजे तक है, या शाम को 6 बजे से 8, 8:30 बजे तक है। लेकिन मुझे आज भी अगर किसी रुग्ण में अलग नाड़ी परीक्षण करने की इच्छा होती है तो मैं उनको कहता हूं कि आप सुबह जल्दी आ जाइए और बिना कुछ खाए पिए आ जाइए, ताकि मुझे कुछ अलग चीजें समझ में आने की जरूरत है।
तो इस तरह से नाड़ी परीक्षण के लिए बुलाता हूँ। और सच में अगर हम लोग सुबह जल्दी और बिना कुछ खाए पिए रुग्ण का नाड़ी परीक्षण करेंगे तो हमें कुछ अलग चीजें निश्चित रूप से उसमें से प्रतीत हो जाती है। वारत्रयम परीक्षेत धृत्वा धृत्वा विमोचेत। पूरे नाड़ी परीक्षण के विधि में ये एक चीज सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है कि वारत्रयम परीक्षित धृत्वा धृत्वा विमोचेत, मतलब 3 बार परीक्षण करना चाहिए, बीच बीच में रुककर वो करना चाहिए। वो इसलिए बताया गया है कि पहले बार हम लोग जब नाड़ी परीक्षा करते हैं तो एक तो रुग्ण हमारे पास काफी उत्सुकता से आ जाता है कि हाँ ये नाड़ी से अब कुछ ना कुछ बताने वाले हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति जो होती है वो मानसिक स्थिति अस्वस्थ रूप की हो जाती है और उसका परिणाम उनके नाड़ी में दिखने लगता है। जब हम एक बार नाड़ी परीक्षण करके हमारी उंगलियां नाड़ी से उठा लेंगे, उसके बाद दूसरी बार फिर से रखेंगे तो उनमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम लोग अच्छी तरह से परीक्षण कर रहे हैं। तो इसलिए एक बार नाड़ी परीक्षण कीजिए, अपनी तीनों उंगलियां उठाइए, थोड़ा समय जाने दीजिए, फिर से तीनों उंगलियां रखकर परीक्षण कीजिए, उसमें से थोड़ा ब्रेक लीजिए और उसके बाद फिर से तीनों उंगलियां रखकर परीक्षण कीजिए। तो आपको दूसरे और तीसरी बार जो किया हुआ परीक्षण है उनमें एक अच्छी तरह से यूनिफॉर्मिटी आप डायग्नोज कर पाएंगे। और उस वजह से अगर हम लोग 3 बार परीक्षण करते हैं, वारत्रयम परीक्षित धृत्वा धृत्वा विमोचेत, एक बार नाड़ी के ऊपर हाथ रखकर परीक्षण किया, छोड़ दिया, थोड़ा सा गैप जाने दिया, फिर से परीक्षण किया, फिर से छोड़ दिया, थोड़ा समय जाने दिया, फिर से परीक्षण किया, तो हमें अच्छे रूप से नाड़ी का ज्ञान हो जाता है। इसलिए 3 बार परीक्षण करने की कोशिश कीजिए। हम लोग कर सकते हैं कि आधा से 1 मिनट तक परीक्षण किया, फिर से गैप लिया, फिर से आधे से 1 मिनट तक परीक्षण किया, गैप लिया, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अंगुलित तृतीयेत पृष्ठवा क्रमात् दोषम त्रयोद्भवम मंदाम मध्याम गतिर्तीक्ष्णाम त्रिभिर दोषेषु विलक्षित। अब मंद, मध्य और तीक्ष्ण गति से तीनों दोषों का ज्ञान करना चाहिए। अब गति के ऊपर का जो वर्णन है वो मैं आगे आपके सामने रखने वाला हूँ। तो इस तरह की विधि है, रुग्ण को सुखपूर्वक आसन में बिठाकर हमारे दक्षिण हस्त से उसके अंगुष्ठ मूल के नीचे एक अंगुल छोड़कर क्रम से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को रखकर एकाग्र मन से, शांत चित्त से हमें उसका परीक्षण करना है। और वो 3 बार छोड़कर, मतलब वारत्रयम परीक्षित धृत्वा धृत्वा विमोचेत, इस तरह से ये परीक्षण करना है। आगे अब ये परीक्षण करने के लिए मैंने एक छोटी सी पद्धति आपके सामने रखी है कि जो इसमें से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एकाग्र चित्त, हमारा मन कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, संकल्प, हमारा संकल्प उसमें होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने के लिए आते हैं कि सर आपसे आयुर्वेद सीखने की इच्छा है, तो वो देखते हैं कि मैं बहुत कम बार पेशेंट को लेटाकर उसको चेक करता हूँ या किसी नाड़ी परीक्षा छोड़कर किसी अलग भाव का परीक्षण उनमें करता हूँ। तो जब क्लिनिक में बैठना शुरू किया तब से थोड़ा बहुत संकल्प मन में था कि हाँ जो कुछ भी आना चाहिए वो नाड़ी परीक्षा से ही आना चाहिए। हाँ, उतना अभी तक मैं प्रवीण खुद को मानता नहीं हूँ, अभी भी मैं नाड़ी परीक्षा का एक विद्यार्थी हूँ, फिर भी कोशिश जो की है उससे सच में कुछ ना कुछ चीजें नाड़ी परीक्षा से ही पता चलती है, वो ठीक है नहीं है, उसमें को कहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ी बहुत चीजें जरूर हम लोग बता सकते हैं। तो इसके लिए संकल्प होना चाहिए। उसके बाद स्व नाड़ी परीक्षण, सबसे पहले नाड़ी परीक्षा अगर सीखनी है तो स्व नाड़ी परीक्षण करना शुरू कीजिए, खुद की नाड़ी देखना शुरू कीजिए, लेकिन खुद की नाड़ी देखते वक्त अपने अंगुष्ठ मूल के नीचे अपनी तर्जनी आ जाए, इस तरह से हाथ को रखना है। अब उसका रेफरेंस भी आगे आएगा कि ऐसा ही क्रम किस तरह से है, उल्टा अगर हमने हाथ रखा तो वो गलत है या सही है, तो उसका भी रेफरेंस मैं आगे देने वाला हूँ। लेकिन स्व नाड़ी परीक्षण करने से शुरू कीजिए। और विद्यार्थी अगर वैद्यों का समूह अगर हो तो समूह में आकर नाड़ी परीक्षण सीखने की कोशिश कीजिए, मतलब 3 या 4 लोगों का, बहुत ज्यादा का भी समूह मत बनाइए, बहुत ज्यादा बड़ा भी ग्रुप मत बनाइए, लेकिन 3 या 4 वैद्यों का या विद्यार्थियों का ग्रुप बनाइए और आप उन 4 लोगों की भी नाड़ी परीक्षण कर सकते हो या किसी 4 या 5 रुग्णों का भी नाड़ी परीक्षण हर एक को करके अपने को जो निदान हो रहा है, हमें जो समझ में आ रहा है वो नोट करना शुरू कीजिए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन लगे कि नहीं, पहली उंगली को नाड़ी लग रही है, तीसरी को नहीं लग रही है, कभी कभी लगता है नाड़ी कुछ भी ना कुछ उड़ रही है, ऐसे लग सकता है हाँ नाड़ी के ऊपर हाथ रखकर बहुत ही उष्ण स्पर्श लग रहा है। तो जो कुछ भी आपको लगेगा उसको नोट डाउन करना शुरू कीजिए
ताकि वो नोट डाउन करने के बाद धीरे धीरे आपको उसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। और अब जब हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं तो जब चारों लोगों का एक मत हो जाता है तब हमें पता चल जाता है कि हाँ, हम लोग कुछ ना कुछ एक ही सही दिशा में सीख पा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ग्रुप करके परीक्षण करेंगे तो भी अच्छा होगा। और साथ साथ दिन के विभिन्न कालों में नाड़ी परीक्षण करने की कोशिश कीजिए। अब दिन के विभिन्न कालों में नाड़ी परीक्षण ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि सुबह उठने के बाद खाली पेट नाड़ी कैसे होती है, उसके बाद भोजन के पूर्व नाड़ी कैसे होती है, भोजन के पश्चात नाड़ी कैसे होती है, शाम के समय में हमारी नाड़ी कैसे होती है, और रात को सोने के पहले हमारी नाड़ी कैसे होती है। अलग अलग समय में जो वयोः रात्रि भुक्तानाम ते मध्याधिक्रमात् दोषों का प्रभाव होगा वो निश्चित रूप से नाड़ी के ऊपर असर करेगा। इसलिए नाड़ी में थोड़े बहुत वेरिएशन आने वाले हैं। तो वो थोड़े बहुत जो वेरिएशंस होते हैं उनको समझने के लिए दिन के विभिन्न समयों में विभिन्न कालों में हमें नाड़ी परीक्षण करना चाहिए। और हमें खुद की नाड़ी परीक्षण करके या हमारे दोस्तों की नाड़ी परीक्षण करके उसमें से नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, इस तरह की चीजों का निदान करने की शुरुआत करनी चाहिए। अब स्त्री रुग्णों में और एक विशेषता है होती है कि मासिक रज प्रवर्तन होता है, तो इसलिए मासिक रज प्रवर्तन काल के पूर्व में, मासिक रज प्रवर्तन जब चालू हो तब, मासिक रज प्रवर्तन होने के बाद ये भी हमें परीक्षण करने की आदत डालनी चाहिए। तो जैसे कि हम इस तरह के नाड़ी परीक्षण करेंगे तो शायद 3-4 बार परीक्षण करने के बाद 5वीं बार हम लोग परीक्षण करके बता पाएंगे हाँ, आपके मासिक रजब प्रवर्तन अब शुरू होने वाला है या अभी अभी आपका मासिक रजब प्रवर्तन होके गया है। तो ये भी आप नाड़ी परीक्षा से उनको बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए सराव करने की आवश्यकता होगी, इसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। अब नाड़ी परीक्षा से हम किन किन चीजों का या किन किन भावों के परीक्षण कर सकते हैं? दोषों की अवस्था, दोषों के प्रकार, धातु दृष्टि निर्धारण, हेतु निर्धारण, व्याधि निर्धारण, साध्यासाध्य निर्धारण। अब दोषों की अवस्था में दोषों की गति, दोष निश्चिति, दोषों के प्रकारों की निश्चिति, ये तो हम कर ही पाते हैं। हेतु निर्धारण के संबंध में मैं एक चीज आपके सामने रखने वाला हूं। हेतु निर्धारण हम लोग जरूर नाड़ी से कर सकते हैं। अब जब हम नाड़ी के ऊपर स्पर्श रखकर किसी भी रुग्ण का परीक्षण करने के लिए शुरुआत करते हैं तो उसकी नाड़ी उस दिन कौन से दोष के ऊपर लग रही है, कौन से गुणों की लग रही है। जैसे मैंने उसके पहले बताया था कि पित्त दोष की नाड़ी लग रही है और उष्ण तीक्ष्ण बहुत लग रही है, तो हो सकता है कि उसने कुछ तीक्ष्ण उष्ण पदार्थों का सेवन किया हुआ है। अब थोड़ा सा उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हम लोग चेक कर कि उसने मिसल पाव खाया है या फिर कोई अलग पदार्थ खाया है या सिर्फ ज्वार की रोटी या हरी मिर्च खाई है, इस तरह का निदान हम लोग कर सकते हैं। मैंने कुछ दिनों में मेरे क्लिनिक में ये प्रयोग किया है कि आने वाले हर एक रुग्ण को नाड़ी देखकर उसने क्या खाया था 2-3 दिनों में वो बताने का। लगभग 70-80% मैं उसमें सफल हुआ हूं। एक दिन तो मैंने 6 रुग्णों का अलग अलग खाया हुआ पदार्थ उनको बताया था। पहला रुग्ण आने के बाद उसको पूछा था कि आपने श्रीखंड खाया हुआ था क्या, तो उन्होंने हाँ कह दिया। दूसरे को बोला आपने कुछ मटर का कुछ पदार्थ खाया है, तो उसने भी हाँ कह दिया था। तीसरे को रुग्ण को मैंने कहा था कि आपने कुछ पनीर का खाया हुआ है, तो वो भी हाँ बोले थे। चौथे को मैंने कहा था कि आपने कुछ बेसन का खाया हुआ है, तो उसके लिए भी वो रुग्ण हाँ बोला था। 5वें रुग्ण को मैंने बोला था कि आपने कुछ फर्मेंटेड फूड खाया है, तो उसके लिए भी उन्होंने हाँ कहा था। तो इस तरह के अलग अलग चीजें हम हेतु निर्धारण के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि पहले ही दिन के परीक्षण में हमें हेतुओं की अवस्था निर्धारित करना नाड़ी से काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक हमें उनकी नाड़ी ज्ञान नहीं होती तब तक हम हेतु निर्धारण के ऊपर नहीं जा सकते। पहले दिन हमें उनका ज्ञान हो जाता है, जब रुग्ण फॉलोअप में आ जाता है, 2-3 बार हो गया, चौथी बार हो गया, 5वीं बार हो गया, तब उसके नाड़ियों में जो बदलाव आ जाता है उस बदलावों का परीक्षण करके आप निश्चित रूप से उनके हेतुओं को बता सकते हैं। आगे चलते हैं। अब स्वस्थ नाड़ी क्या है? सुखिनस्तु भवेन नाड़ी स्थिरा बलवती तथा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें प्राकृत नाड़ी समझ में नहीं आएगी हमें वैकृति का या विकृति का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। तो सुखिनस्तु भवेन नाड़ी स्थिरा बलवती तथा। स्थिर एवं बलवान नाड़ी यह सुखी न की होती है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी होती है। अब यहाँ पे भी हमें थोड़ा
प्रकृति का जो शारीरिक क्रियात्मक भाव प्रकृति है उसका विचार हमें मन में रखना चाहिए कि वात प्रकृति की स्थिर नाड़ी कैसी होगी, पित्त प्रकृति की स्थिर नाड़ी कैसी होगी और कफ प्रकृति के व्यक्ति की स्थिर नाड़ी कैसी होगी। कफ प्रकृति के व्यक्ति की स्थिर नाड़ी सच में स्थिर एवं बलवान और मंद इस तरह की होगी, लेकिन पित्त प्रकृति के व्यक्ति की स्थिर नाड़ी थोड़ी सी तीक्ष्ण उष्ण गुण की और फोर्सफुल रहेगी, लेकिन यूनिफॉर्म रहेगी। और वात प्रकृति के व्यक्ति की स्थिर नाड़ी वो तो स्थिर होने की आशंका है, लेकिन उसमें विषम गुण में भी स्थैर्य लगेगा, मतलब उसमें रेगुलर विषमत्व आएगा, रेगुलर रूक्षत्व आएगा। उसकी गति कभी सर्प या जलव का ऐसी ही हमेशा चेंज रहती होगी। तो ऐसी ही नाड़ी अगर नियमित रूप से प्रदान हो तो उनके लिए वो स्वस्थ समझनी चाहिए, लेकिन उसमें भी एक बल होगा जो कि वो बल उनके निरोगत्व का लक्षण होगा। नहीं तो उसमें भी बल नहीं है और अलग अलग गुणों की वृद्धि या क्षय है तो वो हम विकृत के तौर पर ले सकते हैं। आगे चलते हैं। दोषज नाड़ी। अब ये दोषज नाड़ी में उंगलियों का रिलेशन और गति का रिलेशन काफी महत्वपूर्ण है। अग्रे वातवह नाड़ी मध्ये भवति वित्तलः अन्ते श्लेष्म विकारेण नाड़ी ज्ञेया बुधैः सदा। अब नाड़ी जो अग्र लगती है, अग्र भाग में जो लगने वाली नाड़ी है वो वात दोष के वजह से लगेगी। मध्य भाग में लगने वाली जो नाड़ी है वो पित्त दोष के वजह से लगेगी और अंत में जो नाड़ी लगेगी वो कफ दोष की लगेगी। उसके साथ ही वाते अधिके भवेन नाड़ी प्रव्यक्ता तर्जनी तले पित्ते व्यक्ता मध्यमायाम तृतीयांगुली के कफे। मतलब तर्जनी के नीचे वात दोष की नाड़ी लगेगी, मध्यमा के नीचे पित्त दोष की नाड़ी लगेगी और तृतीय अंगुली के नीचे कफ दोष की नाड़ी लगेगी। इसलिए मैंने बताया कि जो हमें क्रम रखना चाहिए नाड़ी परीक्षा करते वक्त के अंगुष्ठ मूल के नीचे एक अंगुली छोड़कर पहले तर्जनी ही रखनी चाहिए, क्योंकि अग्रे वातवह नाड़ी है। अग्र भाग में वात दोष का के नाड़ी का वहन होगा, तभी हमें प्रतीत होगा। उसके बाद मध्य भवति पित्तलः, तो मध्य में ही हमारी मध्यमा अंगुली आनी चाहिए और तृतीय अंगुली के कफे मतलब तृतीय रूप में ही अंगुली के रूप में या अंत में कफ दोष की नाड़ी आ जाएगी। इसलिए अंगुष्ठ मूल के नीचे एक अंगुल छोड़कर पहले तर्जनी रखिए, उसके बाद मध्यमा रखिए और उसके बाद अनामिका रखिए, तभी हमें क्रम रूप से दोषों का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाएगा। अब उसकी जो गतियों का वर्णन है वो है वातोद्रेके भवेन वातोद्रेके गतिम कुर्यात् जलौ का सर्पयोरिव पित्तोद्रेके तु सा नाड़ी काकमंडुकयोर गतिम हंसस्यैव कफोद्रेके गतिम पारावतस्य वा वातोद्रेके गतिम कुर्यात् जलौ का सर्पयोरिव। वात दोष की वजह से जलौ का एवं सर्प के जैसे नाड़ी का वहन होता है। अब दो क्राइटेरिया तो हमने फिक्स कर ले कि पहले तो अगर बह रही है तो वात की है, दूसरा क्राइटेरिया तर्जनी के नीचे वहन हो रहा है तो वो वात दोष की है, तीसरा क्राइटेरिया जो नाड़ी परीक्षण में आया है वो है उसकी गति जलौ का एवं सर्प की जैसी। अब जलौ का और सर्प कैसे चलते हैं तो सबसे पहले हमें समझ में आएगा कि हाँ चल गुण उसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है वो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जा रहे हैं और वो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे, कर्व होकर जा रहे हैं, इसलिए वक्र यह गुण भी वात दोष का है और वक्रत्व यह भी गति इस तरह से वात दोष के नाड़ी में आ रही है। तीसरी एक चीज जो मुझे वात दोष की नाड़ी में सर्प और जलौका की गति से समझ में आती है वो मैं ये समझता हूं कि उंगली में कभी अग्र उसका स्पर्श होता है, कभी नीचे होता है, कभी बीच में होता है, कभी बाजू में होता है। अब ये जो है वात दोष के विषम गुण की वजह से है और सर्प और जलौका की वजह से है, क्योंकि ये गति है तो ये गति की वजह से पहले कभी लगती है, कभी बीच में लगती है, कभी पीछे लगती है, कभी आगे लगती है। साथ साथ और एक चीज उसमें लगती है, अगर हम जल में किसी जलौका जब हम उसका वमन करने के बाद जल में छोड़ते हैं तो जैसे सुपरफिशियल और डीप दोनों जगह पे तैरती है, वैसे ही वात दोष की नाड़ी भी सुपरफिशियल और डीप दोनों जगह पे व्यक्त होती है। तो कभी वो सुपरफिशियल हो जाती है, कभी डीप हो जाती है, बीच में अचानक से सुपरफिशियल हो जाएगी, बीच में अचानक से डीप हो जाएगी, कभी उंगली के अग्र हो जाएगी, कभी उंगली के अंत में हो जाएगी।
तो इस तरह से वो हमें ये जल और सर्प और जलौका को समझने में लेना चाहिए कि कभी अग्र, कभी अंत, कभी सुपरफिशियल, कभी डीप, और अत्यंत तीव्र गति से और वक्र गति से, ये चारों पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। तो इस वजह से वात दोष की नाड़ी की निश्चिति के लिए अग्रे, उसके बाद तर्जनी, उसके बाद ये सर्प और जलौका गति। पित्त के लिए तो नाड़ी का वर्णन है काक एवं मंडूक। अब मंडूक गति का जो वर्णन यहाँ पे आया है, तो मंडूक जैसे जंप मारता है वैसे छलांग लगाकर, एक फोर्सफुल छलांग जिसमें होगी वैसे नाड़ी का स्पर्श होगा और वो यूनिफॉर्म होगा, जैसे टक 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 टक, अत्यंत फोर्सफुल एवं यूनिफॉर्म वो जंप होगी। साथ में काक, ये जो शब्द आया है, तो काक की नजर अगर हम लोग देखेंगे, कौवे की नजर देखेंगे तो अत्यंत तीक्ष्ण नजर है, तो वो तीक्ष्ण उसमें आने के लिए काक का उल्लेख उसकी गति में आया है। तो उष्ण एवं तीक्ष्ण, साथ में अत्यंत फोर्सफुल और शार्प जब जब नाड़ी लगेगी तब हमें उसको पित्त दोष की नाड़ी काक मंडूक जैसे गति जैसे समझनी चाहिए। हंसस्यैव कफोद्रेके गतिम पारावतस्य वा। अब कफ की गति जो है वो हंस एवं पारावत जैसी। हंस हमें पता है अत्यंत स्निग्ध शांत, जिसमें नित्य मंद गति जैसी अवस्था है, एकदम से यूनिफॉर्म जैसे चलता रहता है, तो इस तरह से उसकी गति होनी चाहिए। मेरे एक रुग्ण के बारे में आपको, टिपिकल हंस गति का रुग्ण था, वो मेरे पास आते थे, लगभग उनका पल्स रेट भी 50, 52, 55 उतना ही रहता था, उसके आगे भी जाता ही नहीं था। तो मैं उनका नाड़ी परीक्षण करके, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप आराम से चले जाइए। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि मेरे तो फिजिशियन जो मॉडर्न के हैं वो मुझे कहते हैं कि आपका तो पल्स रेट कम है, आपको कुछ ना कुछ ईसीजी वगैरह करवा लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप कर सकते हो, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन आपके ईसीजी में कुछ नहीं आएगा, आपके 2D एको में भी कुछ नहीं आएगा। ये आपकी जो नाड़ी है वो कफ दोष की वजह से है नाड़ी, और वो अत्यंत यूनिफॉर्म और मंद रूप से है, तो इसलिए आपको उसकी कोई भी व्याधि नहीं है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और वैसे ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करवा लिए और उनके सभी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल रहे। लेकिन इन गतियों में अगर विषमत्व आ जाए और ये गतियां अधिक रूप से तीव्र हो जाए, मतलब हंस से भी मंद गति होने लगी, तो कफ की दुष्टि समझने लगेगी। वात दोष में विषमत्व बढ़ जाए, रुक्षत्व बढ़ जाए, सर्प जलौका की गति कम ज्यादा हो जाए, तो उसका विषमत्व समझना चाहिए। तो इस तरह से हमें इन चीजों को समझना है। तो अब अगर वात पित्त कफ का हम सारांश दोषों की अवस्था निश्चित करने के लिए देखेंगे, तो चार्ट बना सकते हैं। वात अग्र लगती है, तर्जनी के नीचे लगती है, सर्प और जलौका जैसे लगती है। पित्त मध्यमा के नीचे मध्य लगती है और काकमंडुक जैसी तीक्ष्ण उष्ण गुणों की लगती है। कफ अंत में लगेगी, तृतीयांगुली के नीचे लगेगी, हंस जैसी लगेगी, पारावत जैसे लगेगी, शीत स्निग्ध मंद इस तरह से लगेगी। आगे चलते हैं। ये द्विदोषज नाड़ी का वर्णन है, वो भी थोड़ा और हम लोग आगे जाते हैं। इसमें भी बहुत नाड़ी गति का ही वर्णन आया है। अब ये थोड़ा सा दोषज प्रकारों की नाड़ी का वर्णन मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं कि जब हमें दोषों के प्रकारों का, अब दोषों के प्रकारों का वर्णन कहाँ कहाँ पे आया है, तो चरक संहिता में वात दोष के 5 प्रकारों का वर्णन आया है, सुश्रुत संहिता में वात के साथ पित्त दोषों के भी 5 प्रकारों का वर्णन आया है, और अष्टांग हृदय में वात पित्त के साथ कफ दोष के भी 5 प्रकारों का वर्णन आया है। अब चरक संहिता में क्योंकि अन्योन्यावरण का समावेश है और वात का ही वात के ऊपर आवरण होता है, इस तरह का वात व्याधि निदान में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके लिए 5 प्रकार के वातों का वर्णन चरक संहिता में आया है। अब नाड़ी में हम इस प्रकारों का ज्ञान कैसे कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक हाथ का चित्र रखा है जिसमें वात की उंगली को हम लोग 5 स्थानों में विभाजित करते हैं और अग्र में प्राण को लेकर अंत में अपान तक, इस तरह से हमें उसका परीक्षण करना है कि अग्र में प्राण का परीक्षण कीजिए, अंत में अपान का कीजिए, बीच में प्राण उदान समान व्यान, इस तरह का हम लोग क्रम रखिए। अब ये जो क्रम है वाग्भट को फॉलो कीजिए। वाग्भट ने जहाँ पे वात दोष के प्रकार है, उसके बाद पित्त के है, उसके बाद कफ के, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 में उन्होंने जो क्रम फॉलो किया है वही क्रम को आप फॉलो करके दोषों के प्रकारों का निदान कर सकते हैं।
अब ये दोषों के प्रकारों का निदान किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है? हमें दोषों के प्रकारों के दुष्टि के हेतु ग्रंथ में वर्णित है, दोषों के प्रकारों के वजह से होने वाले व्याधियों का वर्णित है, तो इस तरह से हम लोग उसका फायदा निदान के लिए कर सकते हैं। साथ में दोषों के प्रकारों के अलग अलग स्थान भी है, तो अगर हम स्पर्श करके उसके प्रकारों तक पहुंच सकते हैं तो उस स्थान की दृष्टि भी हम नाड़ी परीक्षा से कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए भी दोषज प्रकारों के नाड़ी परीक्षण का महत्व है। आगे चलता हूं, थोड़ा व्याधियों के नाड़ी के परीक्षण के ऊपर आता हूं, क्योंकि समय थोड़ा खत्म होने की ओर है। व्याधि की नाड़ी, अब यहाँ पे मैंने 3-4 उदाहरण व्याधि की नाड़ी के परीक्षण के तौर पर रखे हैं। पहला तो परीक्षण है सबसे आसान मुझे लगता है, ज्वर के नाड़ी का वर्णन मैंने रखा है। उष्णा वेगवता न वेगवती नाड़ी ज्वर कोपे प्रजायते। अत्यंत उष्ण और वेगवान युक्त नाड़ी जहां पे वहन होती है तब वह ज्वर के व्याधि में होती है। आप परीक्षण कीजिए, वो तो आसान है। जितने भी टेम्परेचर के रुग्ण हो उनको पहले बुला लीजिए, उनका नाड़ी परीक्षण कीजिए और आपको उष्ण और वेगवान नाड़ी लग रही है या नहीं लग रही है, इस तरह से आप उसका निदान कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा जो स्किल है वो स्किल थोड़ा सा ऐसा है कि हमें दोषज प्रकारों का निदान करने के लिए अगर वात प्रधान ज्वर हो तो उसमें वेग ज्यादा होगा लेकिन औष्ण्य थोड़ा सा कम होगा। अगर पित्त प्रधान ज्वर हो तो उसमें औष्ण्य ज्यादा होगा, साथ साथ वेग भी होगा, लेकिन वो वात प्रधान उतना ज्यादा नहीं होगा। और अगर कफज ज्वर है तो उसमें गति और औष्ण्य दोनों भी वात पित्त से थोड़े से कम होंगे। इस तरह से जो सूक्ष्म प्रकार है वो हमें प्रकारों का ज्ञान समझना चाहिए और थोड़ा थोड़ा उसमें हमें बदल हमारे सीखने के लिए करना चाहिए। और दूसरा जो सूत्र है वो थोड़ा सा कठिन है परीक्षा में, लेकिन उसको भी एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। मेहे अर्शांसी मलाजीर्णे शीघ्रम तु स्पंदते धरा। मतलब मेह, अर्श और मलाजीर्ण, इन तीनों व्याधियों में शीघ्रम तु स्पंदते धरा, नाड़ी जो है उसका वहन शीघ्र होता है। अब ये हमें कैसे समझना चाहिए, ये हम कैसे सीख सकते हैं? तो इसके लिए हमें मेह, अर्श, मलाजीर्ण इन तो तीनों की संप्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए। अगर प्रमेय की नाड़ी के बारे में हम लोग सोचेंगे तो प्रमेय के व्याधि में बहु द्रव श्लेष्मा दोष विशेषतः बहु अबद्ध मेदो मांसत्व एवं जब मधुमेह में परिवर्तित होता है तो वात प्रधान अवस्था, इन तीनों चीजें हमें दिखाई देगी। तो इसलिए कफ की उंगली पर थोड़ा बहुत नाड़ी का चलना, उसके साथ वात की उंगली पर शीघ्र गतित्व, और जब धातु नाड़ियों का विचार हम लोग करते हैं तो उसमें मांसमेद के नाड़ी के ऊपर वात एवं कफ का स्पंदन। अब धातु नाड़ी के बारे में जैसे दोषों के प्रकारों के नाड़ी का ही हम लोग विभाजन करते हैं, वैसे ही वात पित्त और कफ की उंगली पे 7-7 विभाग धातुओं के कीजिए और उसमें से वात की नाड़ी के ऊपर कौन सा धातु लग रहा है या पित्त की नाड़ी के ऊपर कौन सा धातु लग रहा है या कफ के नाड़ी में कौन सा धातु लग रहा है, इस तरह से उसका निश्चित करने की कोशिश कीजिए। वैसे ही अगर अर्श हो तो रक्तार्श में शीघ्र ही नाड़ी लगती है लेकिन पित्त और रक्त के नीचे लगती है, और अगर शुष्क अर्श हो तो शीघ्र ही नाड़ी लगती है लेकिन वात प्रधान उंगली के नीचे लगती है। तो इस तरह से उसमें हम लोग सूक्ष्म फर्क कर सकते हैं। अब तीसरी एक जो नाड़ी है वो गर्भिण्याम ज्वरवत, गर्भिणियों में ज्वर जैसी नाड़ी लगती है, इस तरह का वर्णन आया है। एक आपके सामने केस रखने वाला हूं। एक रुग्णा मेरे पास आई थी और वो आई लगभग पीरियड्स के बाद 34वें दिन वो आई थी, और आने के बाद मैंने उनका नाड़ी परीक्षण किया और पूछा कि नहीं आपको क्या तकलीफ है और आप किस लिए आए हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं, तो सर आप मुझे कुछ दवाई दे दीजिए कि तो ताकि मेरे पीरियड्स आ जाए। तो आजकल का प्रोटोकॉल तो है ही कि नहीं, एक तो यूपीटी करवा लो या फिर यूएसजी करवा लो और उसके बाद ही इस तरह की दवाई दे दो। लेकिन मैंने जब उनकी नाड़ी का परीक्षण किया तो मुझे वो थोड़ी सी ज्वरवत, मतलब उष्ण तीव्र वेगवती के तरफ जाने वाली नाड़ी लगी, लेकिन उनमें ज्वर के कोई भी लक्षण नहीं थे, मतलब देहेंद्रिय मनस्संताप जैसे कोई भी लक्षण नहीं थे। तो मेरे मन में आशंका है कि शायद ये गर्भधारणा न हो या न हो। तो मैंने उनको कहा कि अभी शायद 34वां दिन है, मैं अभी पूरा निदान नहीं कर पा रहा हूँ,
लेकिन आप और 3-4 दिन बाद आइए, लगभग 37वें या 38वें दिन आ जाइए। अगर तब तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो कुछ भी मत कीजिए, दवाई भी में कुछ भी मत लीजिए। तो उसके बाद वो 4 दिन के बाद रुग्णा फिर से मेरे पास आई। मैंने नाड़ी परीक्षण किया तो गर्भिण्याम ज्वरवत जैसे नाड़ी के स्पंदन स्पष्ट हो चुके थे। मैंने कहा मैं अभी आपको कुछ भी दवाई नहीं दूंगा, आप पहले यूपीटी करवा के लीजिए और उसके बाद ही हम लोग आगे का ट्रीटमेंट प्लान जो है वो प्लान करेंगे। तो मॉडर्न में भी लगभग अराउंड 40 डेज में यूपीटी पॉजिटिव आ जाती है। तो 38 डे था, नाड़ी व्यक्त हो चुकी थी, तो उन्होंने दूसरे दिन नाड़ी यूपीटी करवा ली और वो पॉजिटिव आई और वो उसके बाद वो मेरे पास आए, नहीं सर आपने सही कहा था, अभी मेरी यूपीटी पॉजिटिव आ गई है। तो मैंने उसके बाद कहा कि आप अगर चाहो तो मैं आपको मासानुमास चिकित्सा भी दे सकता हूँ, या फिर आपको अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर उनकी तरफ से उनकी जो चिकित्सा है वो अगर लेनी है तो वो आप ले सकते हो। तो इस तरह से हम लोग नाड़ी परीक्षा के आधार पर अच्छी तरह से निदान कर सकते हैं और नाड़ी परीक्षा से ही आगे चल सकते हैं। अभी एक अंतिम सूत्र ले रहा हूँ असाध्य नाड़ी का, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। मंदम मंदम शिथिल शिथिलम व्याकुलम व्याकुलम वा स्थित्वा स्थित्वा च वहति धमनी याति सूक्ष्मा च सूक्ष्मा। अब जब असाध्य नाड़ी होती है तो बहुत जल्दी ही ये बदलाव नाड़ी में दिखने लगते हैं। कभी कभी नॉर्मल लगने वाली नाड़ी मंद मंद हो जाती है, कभी कभी शिथिल शिथिल, मतलब जैसे लग रही है और हाथ से छूट रही है, लग रही है और हाथ से छूट रही है, इस तरह से लगती है। व्याकुलम व्याकुलम वा, अब ये व्याकुलत्व मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा लेकिन काफी डिफिकल्ट है। रुग्ण जब अत्यंत व्याकुल होता है कि मैं मरने वाला हूं या मेरे कुछ जिंदा होने की अवस्था है, वो जो व्याकुलत्व उनके आंखों में भी दिखता है वो ही नाड़ी में प्रव्यक्त होता है, उसको परीक्षण करना पड़ता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। स्थित्वा स्थित्वा च होती, ये हम लोग जरूर परीक्षण कर सकते हैं। रुक रुक कर चलती है, मतलब नाड़ी चलती है बीच में रुकती है, फिर से चलती है बीच में रुकती है, इस तरह से उसका लक्षण लगता है। और बहते बहते वो सूक्ष्म सूक्ष्म हो जाती है, बीच में अचानक से बंद हो जाती है, अचानक से फिर से स्फुरती है। तो इस तरह से वो नाड़ी का वहन होता है जो कि असाध्य नाड़ी है। मैंने इस तरह की नाड़ी भी कुछ न कुछ रुग्णों में देखी है और नाड़ी देखकर हाँ अब उनका कम अवधि रह गया है, इस तरह का निदान भी उनके रिलेटिव को बताया है। नित्यम स्कंधे स्फुरति पुनः अपि अंगुलिं स्पृशेद्वा भावैः एवं विध बहुविध तस्यात् सन्निपातात्तु असाध्य। अब सन्निपातों के कठिनतम अवस्थाओं में इस तरह की नाड़ी स्कंधे स्फुरति, अब स्कंध में लगने वाली नाड़ी नहीं लगती है, साथ में कंठ की नाड़ी का यहाँ पे परीक्षण कीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाती है। वह कंठ की नाड़ी अगर मंद मंद हो रही है, शिथिल शिथिल हो रही है या फिर स्थित्वा स्थित्वा च वहति होकर सूक्ष्म हो रही है तो निश्चित रूप से मृत्यु नजदीक आ गई है। इस तरह से आप लोग परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जितने सारे अलग अलग शेड्स आपके सामने नाड़ी परीक्षा के रखने की कोशिश की है, तो वो जब जितना मुझे समझ में आता है उसमें से बहुत सारे शेड्स आपके सामने रखने की कोशिश की है। और सच में हम लोग नाड़ी परीक्षा से दोषों की अवस्था से लेकर व्याधि तक की अवस्था एवं मृत्यु सूचक लक्षणों की अवस्था तक का नाड़ी से हम लोग निदान कर सकते हैं। फिर से एक बार कुछ चीजें दोहराता हूं कि आपको संकल्प बहुत ही जरूरी है, आपके मन में ठानना जरूरी है कि मुझे नाड़ी परीक्षा से ही निदान होना चाहिए, तो ये चीजें निश्चित रूप से आपको साध्य हो जाएगी। फिर एक बार मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्राप्त करके दिया कि नाड़ी परीक्षा जैसे विषय के ऊपर मैं मेरा मत आपके सामने रखूं। यह वेबिनार काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि लगभग 3 दिनों में 12-13 लोगों के अलग अलग लेक्चर्स नाड़ी के अलग अलग विषयों के ऊपर आपके सामने है। तो इस सभी का आप अच्छी तरह से लाभ उठाइए और अधिक नाड़ी परीक्षा में तज्ञ वैद्यों की निर्मित हो जाए, इस तरह का की प्रार्थना धन्वंतरी चरण में करके मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर संजय सर, ओवर टू यू। नागवनकर जी उस नाड़ी परंपरा से है
जो पुणे की प्रसिद्ध लागवनकर वैद्य परंपरा है। और बिल्कुल ग्रंथ के आधार के साथ उन्होंने नाड़ी परीक्षा के विविध अंगों को स्पर्श किया है। एक शंका मेरे मन में आई थी जो मैंने प्रश्न के रूप में लिखी थी कि आपने कहा कि हम जब नाड़ी देखते हैं तो वात की उंगली, पित्त की उंगली और कफ की उंगली के साथ साथ भाग करते हुए वहां पर धातुओं को देखना चाहिए। तो हर एक उंगली के 7 हिस्से करना है तो वहां धातु जी सर। मिलेंगे, 5 हिस्से करेंगे तो 200 प्रकार मिलेंगे, ऐसा आपने जी कहा। जी धातुओं जी का सर। शायद वर्णन आप समय के अभाव में नहीं कर पाए, तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। पर एक अच्छा विषय धातुओं को समझना जो है वो सामान्य नाड़ी परीक्षा में कम लोग करते हैं, तो अगर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा लगेगा सभी के हिसाब से। मैं आपको विनती करना चाहूंगा। थोड़ा सर इस चीज में इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि दोषों के प्रकारों को जैसे हम लोग परीक्षण करते हैं वैसे ही तीनों उंगलियों में 7 विभाग करके, लेकिन उसी हाथ पर करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमको कंसंट्रेट करके दोषों के ऊपर करे, गुणों के ऊपर करे, प्रकारों के ऊपर करे, इसलिए थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि पहले दोषों का प्रकारों का आप लोग परीक्षण करें, बाद में दूसरे हाथ के ऊपर फिर से परीक्षण करें और उसमें हर एक उंगली के 7 भाग करके रस से लेकर शुक्र तक वो आप प्रकार करके उसका परीक्षण करने की कोशिश कीजिए। तो सच में आपको वात की उंगली में कभी मांस का आधिक्य लगेगा या मांस में वात की दुष्टि के तौर पर लगेगा, रक्त में पित्त जैसी अवस्था लगेगी, या इस तरह के आप भावों का परीक्षण जरूर कर पाएंगे और उसका निश्चित रूप से व्याधि निदान में भी आपको फायदा मिल सकता है। मैं इसको थोड़ा सा एक प्रश्न आपके उत्तर से आया है, क्या दोनों हाथ की नाड़ी देखने का आप सजेस्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी नाड़ी दोनों देखना है हाथों तो की दोनों नाड़ी, हाथ की नाड़ी देखना है, पहले एक हाथ की दूसरे हाथ की बाद में। हाँ, दोनों नाड़ी दोनों हाथों की नाड़ी को देखने का अभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए ये चीज के लिए आप बहुत दोनों सही। हाथों की नाड़ी का परीक्षण करने की कोशिश कीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक ही हाथ की नाड़ी के में परीक्षण करना और कंसंट्रेशन का काम है और थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग दोनों हाथों का परीक्षण करेंगे तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। One question is there by Dr. Thakur sir. मृत सर्पवत नाड़ी के बारे में वो जानना चाहते हैं। Will you please throw some light? काफी इंटरेस्टिंग विषय है मैडम, मृत सर्पवत नाड़ी। सर्प की जो गति है हम लोग देखते हैं कि अत्यंत चल एवं तीक्ष्ण रूप में वो चलता है। अब ये मृत सर्पवत के 2 अर्थ है। मृत जब सर्प होता है तब उसके थोड़े से पहले उसकी जो अवस्था है वो बलहीन होकर वो फड़फड़ाता है। तो गृहिणी में जब वात प्रधान या पित्त प्रधान अवस्था होती है तब अत्यंत दौर्बल्य की वजह से नाड़ी की गति भी बढ़ जाती है और वो अत्यंत मैं कह सकता हूँ बलहीन होकर सर्प जैसे फड़फड़ाती हुई जिस उस तरह से हमें प्रतीत होती है। लेकिन उसमें अगर आमांश ज्यादा हो या कफ की अवस्था ज्यादा हो तब उसकी गति में थोड़ा स्थैर्य होता है, लेकिन बल उसमें भी नहीं लगता है। इस तरह की नाड़ी लगती है जिसको हम मृत सर्प के जैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और एक इसके लिए मैडम और एक चीज मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कोंकण जो प्रांत है महाराष्ट्र का, उसमें सर्प को मारने के बाद उसको जलाने की एक क्या है परंपरा है। तो वो जब लोग सर्प को मारने के बाद उसको जलाते हैं तो जलाते वक्त भी वो थोड़ा फड़फड़ाता है जो कि मृत सर्प का लक्षण है। तो इस तरह से हमें ये मृत सर्पवत नाड़ी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये व्याधियों के नाड़ी के निदान के संदर्भ में थोड़ा मैं ऐसे आपको पढ़ाने की इच्छा से इस तरह से मैं सोचता हूँ कि हम लोग हेतु, संप्राप्ति, लक्षण इस तरह से ग्रंथ में से पढ़ते हैं तो हम लोग लक्षणों के ऊपर भी निदान कर सकते हो। तो निदान करने के बाद उनका नाड़ी परीक्षण कीजिए और उसका कंपैरिजन ग्रंथोक्त व्याधि के नाड़ी के लक्षण के रूप में कीजिए, तो शायद हमें उसका आकलन और ज्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा। और अगली बार जब रुग्ण आता है तब हम उसको नाड़ी परीक्षा करके ही उसके व्याधि के बारे में निदान करने की कोशिश कर पाते हैं।
Yes, sir. Definitely, definitely. One more question is there. Actually, दोषों के बारे में मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल है सर कि असाध्य नाड़ी जो आपने बताई ना, तो उसमें आप दोषों के हिसाब से कैसे बता सकते हैं? हम लोग कैसे देखिए असाध्य नाड़ी को? आपको किस अंगुली पर और कौन से दोष की नाड़ी असाध्य जैसे प्रतीत होती है, लगती है? हाँ, असाध्य में नाड़ी में मैडम ज्यादातर सन्निपातिक अवस्था ही दिखती है, तीनों दोषों की अवस्था दिखती है, और तीनों दोषों की अवस्था में ये जो गति विशेष है, मतलब अचानक से शीघ्र गति होना, अचानक से मंद होना, अचानक से रेगुलर होना और अचानक से नाड़ी छोड़कर वो लगना ही नहीं, इस तरह की अलग अलग अवस्था निश्चित रूप से देखी जा सकती है। मैं एक रुग्ण का अरिष्ट निदान का उदाहरण आपके सामने उसके लिए रख रहा हूँ। एक पुणे के प्रसिद्ध हॉस्पिटल में आईसीयू में एक रुग्ण थे, मुझे उनके परीक्षण के लिए बुलाया था। तो जब पहले मैं गया था तो उनकी नाड़ी उतनी असाध्य नहीं लग रही थी, लेकिन उनके पाद मतलब शोथ उनके पाद से होकर शुरू होकर पूरे सर्वांग शरीर में फैला हुआ था। तो ये एक चीज शोथ के संदर्भ में अरिष्ट के रूप में मुझे उनमें पता चल गई। उसके बाद अचानक से उनको एक दिन 3-4 दिन आईसीयू में होने के बाद अचानक से एक दिन उनके प्रभा में बदलाव हुआ और अचानक से वो फ्रेश दिखने लगे, ठीक लगने लगे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि रुग्ण आज बहुत ही ठीक है, हम लोग शायद उनको रूम में शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि ये अचानक प्रभाव और छाया का जो बदलाव हुआ है वो शायद अरिष्ट सूचक हो सकता है, इसलिए मैं भागकर उनको देखने के लिए चला गया। तो उनकी जो मुझे नाड़ी लगी, तो उनके नाड़ी में ये बदलाव मैंने महसूस किए कि तीनों उंगलियों के नीचे लगती है, लेकिन उसमें भी मिश्रण होता है, कभी बात के ऊपर लगती है, कभी कफ के ऊपर लगती है, और वो ज्यादातर गति में परिवर्तित होती है कि शीघ्र लगती है, फिर से कम हो जाती है, लगते लगते छूटती है, फिर से अचानक लगने लगती है, इस तरह का बदलाव उनमें लगता है। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम डॉक्टर नीलम जी। दोनों हाथों की नाड़ी तो अलग होती है, तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ आपका एक अनुभव कुछ? अलग तो मैंने देखी है, लेकिन उसका ज्यादा अनुभव मेरे पास नहीं है कि अलग किस वजह से है, और उसका ज्यादा कुछ मैंने इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, क्योंकि अलग होती है तो बाएं हाथ की अगर स्त्रियों की देखता हूं तो निदान उसके ऊपर करता हूं, सिर्फ धातु नाड़ी के लिए उसकी दूसरी नाड़ी का मदद लेता हूं, लेकिन बाकी उसका अलग इंटरप्रेट नहीं कर पाया हूं। Okay, yes sir, thank you. Any more questions, doctors? You can ask directly, you can unmute yourself. Just 1 minute we will have. सर दूत नाड़ी के बारे में भी कुछ बता सकते हैं तो प्लीज। दूत नाड़ियों में का परीक्षण तो मैंने किया है, और मेरे यहाँ पे जब रुग्ण नहीं आते और उनके कोई रिलेटिव वगैरह आते हैं तो उनका परीक्षण मैं जरूर करता हूँ, और उनके परीक्षण से रुग्ण का निदान करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष तक पहुंचने इसका ज्ञान उसका अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, परीक्षण करके कोशिश जरूर करता हूँ, कुछ कुछ थोड़ी चीजें कह सकता हूँ, लेकिन दूतों के जो भाव होते हैं वो रुग्णों के भावों को प्रकट करने वाले तब होते हैं, इसलिए उनके नाड़ी में बदलाव होकर हम लोग परीक्षण करते हैं, कर सकते, इस तरह का मेरा अनुमान है। एक मेरे विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, उनके पिताजी बहुत बीमार थे, तो वो कोल्हापुर में थे और विद्यार्थी मेरे यहाँ पे थे। तो वो विद्यार्थी हमेशा मुझे उनकी नाड़ी दिखाकर, नहीं सर बाबांना औषध द्यायचं आहे तर तुम्ही कसं कराल, तो मैं उनकी नाड़ी देखकर उनको दवाई दे देता था। तब ये भाव जो उनके मन में होते थे कि अपने पिताजी के बारे में अपने जो भाव होते हैं, तो वो उस व्याधि को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से हमें थोड़ा बहुत उससे निदान हो जाता है। सर यहाँ पर फिर आपने लाइक दोष और प्रकृति के बारे में थोड़ा सा अनुमान लगाकर ये आपने सोचा कि जी ओके ओके ओके, यस, जी, थैंक यू वेरी मच, रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर। एनी मोर क्वेश्चंस डॉक्टर्स प्लीज? सो इंटरेस्टिंग है सर काफी, बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस एक्सप्लेनेशन। तो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमने पारंपरिक परीक्षा जो परंपरागत वैद्य है डॉक्टर लक्ष्मण सर जी, उनके बारे में हमने सुना, उनका ये सेशन बहुत ही काफी लाभदायी रहा, अच्छा रहा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ। टेक्नोलॉजी जैसे हमें आज 2022 में इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा 2 सालों से हम लोग अनुभव कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी टेक्नोलॉजी के साथ चलना और अपने जो पुराने सारे प्राचीन आयुर्वेद के जो भी रूल्स है या जो भी हमारे ट्रेडिशन है उसके साथ उसको फॉलो करना। सो ऐसे ही एक हमारे जो श्री अनुरुद्ध जोशी सर जी है, उनको यहाँ पर मैं आमंत्रित करती हूँ, उनका स्वागत है।
और डॉक्टर जोशी सर प्लीज आप उनका परिचय दे दीजिए। डॉक्टर अनिरुद्ध जोशी जी जो है वो पीएचडी हैं कंप्यूटर साइंस में आईआईटी बॉम्बे से, और वो स्पेशलाइजेशन करते हैं डाटा एनालिसिस में और मशीन लर्निंग में। सीएसआईआर एसआईआर रिसर्च फेलोशिप 5 साल से हैं वो, और फेलो हैं, और फाउंडर एंड सीईओ हैं आत्रेय इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के। वो फाउंडर हैं आरपीडीएस इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के। 3 पेटेंट्स और 35 से ज्यादा पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में और कॉन्फ्रेंसेस में उनके नाम से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिरुद्ध जोशी जी। थैंक यू सो मच सर, वी आर वेरी मच ईगर टू लिसन यू सर, बिकॉज टेक्नोलॉजी के साथ नाड़ी परीक्षा को आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सो ओवर टू यू सर, वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me. Dear Chajar sir, respected Joshi sir, Acharya sir, and all the dignitaries. First of all, namaste to all. It was such a treat to hear Dr. Lavgaonkar sir. It's easy and difficult to follow him. Actually, it's easy because he has set all the rules about Nadi. So I just have to, explain further how I have done the digitization of that Nadi, and difficult because I have to take it ahead of what he just explained. So let me share my screen and let me know once it is visible. Is it visible? Can I start? Yes, Okay. yes. All right. Excellent. So I'm the founder of company Atre Innovations, and we are creating world's best personal, predictive, and non-invasive health monitor. We have combined the best of Ayurveda, data science, nutrition science together to provide healthcare wellness to people. Very happy to tell that we won this year's National Startup Award. We are the only awardee in the Ayush category. Currently, we are working with TCS on a large project. Very proudly, we are Make in India and Atmanirbhar. आयुर्वेद से बड़ा लोकल साइंस हो नहीं सकता, एंड जो ब्रीद वाक्य है आत्मनिर्भर का वो यही है कि वोकल फॉर लोकल। हमें बहुत वोकल होना चाहिए आयुर्वेद के बारे में पूरे विश्व में। वेरी हैप्पी दैट WHO और आयुर्वेद की मीटिंग हुई और उस दिशा में चल रहा है। ऑल्सो वी गॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय DSIR for our innovative work in this indigenous technology side. Also, Honorable Modi ji mentioned us in latest Mann Ki Baat this Sunday, so we are very happy that some kind of recognition is happening at various ends, and I'm sure that technology will take Ayurveda to the world in today's language, which is the language of numbers, language of reports, comparisons, and so on. I think this is what essentially we are solving. There were so many non-communicable disorders which are happening across the world. More than 70% of the deaths are happening because of pressure, diabetes, cancer, thyroid, anxiety, and so on. And we all know that the root cause of such disorders is usually a bad lifestyle, some irregular diet or a bad diet, stress, pollution, some sleep issue, nutrition deficiency, and so on. So it starts with a lifestyle problem, but it eventually results in some non-communicable disorder, which sometimes leads to death. So it's very important that early we diagnose that something is not balanced, something is not going right, and we stop from converting that imbalance into some disorder. So to do that, as I said, we have combined data science with Ayurveda and also now with nutrition. How we have combined, I'm going to explain in next 20 minutes. I think we heard about this Ashtavida Pariksha. We just saw the shloka
from Dr. Lakshman sir. And these are all technological advancements, all the medical devices which are currently available in allopathy. There are various categories of medical devices which are available, and we use them in various scenarios. Class 1, 2, 3, 1B, and so on, A, B, and 3. And basically, these are different types, non-invasive to invasive to super invasive, and doing various things in or on our human body. This is where actually the world is moving. All right. Our science is 5,000 years old, but we have to make sure that we have to speak also, we have to also speak world's language, which is of wearables, which is of smart watch format, which is about portable instrumentation. Very soon, the drugs are going to be 3D printed in the sizes which we like. Most things are going to be at home in terms of various tests, various lab tests, and so on. The corona pandemic period has actually triggered many of these where, the distance has increased. And so monitoring, alarms, home tests are picking up very heavily, especially in modern medicine, and also picking up in Ayurveda. So how do we really combine so that it really helps ultimately the consumer, the patient, the user, and so on. This is what 2030 looks like. Okay, a typical person is going to wear at least 10 to 15 sensors on body. It's going to be a glass, smartwatch, smart shirt, smart belt, smart ring, smart finger, and so on. So many smartness which we are going to actually wear. Where exactly can Ayurveda fit into this? Actually at all, but because we are talking about Nadi at the moment, so there has to be a Nadi sensor. And when the world talks about 15 sensors in 2030, we have to make sure that one of the sensors is our Nadi sensor, and it is smart enough to provide predictive power, and it actually helps the user to have a very healthy and happy life. Let me start with our first product, which is Nadi Tarangi. We launched this in 2016 for Ayurvedic doctors. Again, going back, this was specifically about pulse, about Nadi. I'm not going to go into details of next few slides because I think in the first lecture, we have already covered most of these things. So basically personalized balance versus imbalance. So we are trying to find out which dosha, which guna, which dhatu, which upadhatu, which upadosha is actually not balanced. And so which medicines or what diet can be taken so that that particular imbalance goes back to the balance stage. So different people appear different, their physical appearance is different, they have different personalities, inherently they are different people. And then this imbalance is at various levels, and it happens because of so many things. I mean, I have mentioned a few, but that because of so many things, the imbalance starts happening inside the body. And that's when a patient comes to the clinic, and as Dr. Lagankar explained, the Vaidya feels the pulse and tries to find out what is aggravated, what is vitiated, and so on. And if we can find out what is really wrong, what is really imbalanced, the further process can be explained very easily to the patient, and also in terms of diet or in terms of medicine, it can happen very easily. So my work actually started in 2005, 6, 7. So back in 2003, 4, my father was not well, and I think 2002, 3, 4. And Vaidyaraj Ashok Bhatt from Pune, he treated my father. And again, he treated him through Nadi Pariksha. And I was, as an engineer, I was really thrilled how only 3 fingers, keeping them on a wrist, can really find out so much information about the patient.
and ultimately solve the problem. So I took that subject as my PhD topic at IIT Bombay. So it was one of the first ones to have technological aspect in the field of Ayurveda. I used so many sensors. I tried with a mic, with a capacitive pressure sensor, and many more sensors. I'm sure you must have seen various different machines also, right from ranging from Veda Pulse to Dr. Pathak's Pulse to the one from Bangalore and so on. So we tried so many sensors, and ultimately we settled on this particular sensor. And the story is very, very interesting that when I used to come up with a new system, new pressure sensor or any sensor, basically whenever I used to read or hear or feel the pulse using this particular sensor, then I used to collect some data, go back to Vaidraj and show him the graphs that so and so graph has come up. So he used to look into the graph, try to find out what he feels and so on. So discussions will happen. So once in 2006 or 7, when I took the waveforms in the printout format to him, he actually saw the printout and he mentioned that, this appears to be a female pulse between 25 years old, 30 years old kind of pulse. And this particular person is having chest pain and it's because of gases and so on. So he was actually able to see in the waveforms what he can feel on the wrist. So that's when we thought that I think the sensor is right and the kind of signals, the kind of data that we are receiving on the paper, on the computer in the visualization format is correct. Now is going to be the big journey where we really try to have mathematical modeling, where we try to decipher what he actually thinks or various Vaidyas think, feel, and convert that language into the computer science language, which is of frequencies, wavelengths, and so on. So 2009, 10, 11, we came up with this particular simple system in which we have 3 sensors, 3 graphs. My thesis was accepted by IIT Bombay, and later Indian government's CSIR actually funded us to convert this thesis, this concept, this Ayurvedic science into a medical device, basically a prototype which can actually be useful for practitioners, for doctors, and eventually to the users. So I worked at National Chemical Lab, NCL, in Pune to actually convert that into a prototype level. And we installed such machines at 20 different Ayurvedic clinics, hospitals, colleges, right from Gandhinagar to Bangalore, especially the western region to start with. And we collected a large data set. We collected doctors' inputs, we collected Nadi, we collected patients' actual information, and we tried to correlate the Nadi outputs, which we found through computer programs, and we tried to validate how much is correlating with various inputs which were given by the doctors. And we realized that there was 75%, 80% correlation. And that's when, Anand Deshpande of Persistent Systems. So I'm sure most of us have heard about Persistent Systems. So he actually motivated me that I should start my own company and start manufacturing and enter into the market so that this reaches out to the masses. So I started the company, and so Nadi Tarangini was designed, developed, and finally marketed. So in 2014, I happened to meet Dr. Valiyathan, Padma Vibhushan, great personality. He's actually I think cardiologist, allopathy doctor, but also has worked tremendously in the field of Ayurveda. So when I explained in 2014 that, I have a prototype ready, the only thing he told me was, I'm sure that in your journey, you will do this, you'll do that, and so on. But we Indians usually lack the design part. Our machines, our instruments do not look nice. The German products, the Japanese products, the American products also look nice. So definitely look into that.
spend power, energy, money also in the design part, so that it can be later exported to the world. So we have got this designed by Satish Gokhleji of Design Directions. We won many awards for this particular machine, especially from the design point of view. I will explain further why and how design helps. So by now, about 500 centers are in India. We have diagnosed more than 150,000 patients using Nadi Tarangini. We got awarded by a couple of awards in technology, in Ayurveda, and so on. One of them I have mentioned here about excellence in IT by the Ministry of Ayush. So this is all about, as you can see that patient keeps the hand on the machine like this. So all 150,000 data has been collected in this format. So there is a similar kind of standardization. And then doctor feels the pulse using the sensors. So let me show you how it works. So the patient is keeping the hand. The doctor wears the 3 sensors and puts on the wrist where the nadi is available for a minute. And once the data is recorded, you get a report card. It's a 10-page report card with 22 different Ayurvedic parameters. You get graphs, you get scores, you get ranges, and so on. So typically you get this kind of report card. So, something which you can show to the patient, which you can discuss with the patient. As a doctor explained, that whenever nadi is felt in so and so manner, you can ask the question or some questions to the patient in so and so manner. So basically, many doctors are using Nadi Tarangini in that fashion, in which they try to understand what is going right, what is going wrong, and so on. So different types of pulse we receive. I've shown a few of them here, and we have got more than 200 patterns now, but a few of them I have shown here. So the leftmost we are very familiar with now, because almost every one of us has used pulse oximeter at home during last couple of years, and it appears like that. So this is the most simplest graph which lacks the inter variability, the sukshmata inside the pulse, and so on. So Vaidya Lakshman explained about yoga abhyas, own concentration, and so on. So actually you can feel something like, which is I've shown in the third or the fourth figure. So with that concentration, Vaidya is actually able to feel so many peaks and troughs on the wrist, and then try to find out what is missing, what is happening, and so on. And this is very easily can be converted into which fingertip, which side of fingertip, and so on. Very interesting photo I'm showing here on the right. So when we used to visit Dr. Ashok Bhatt, Vaidyaraj Ashok Bhatt, so he used to pick up any instrument, anything, and he used to tell us, now feel this, and tell us what you can feel on this particular hardware or table or chair, or in this case the churi basically. And then he used to speak about, this is so and so feeling, that is so and so feeling. So if your pulse moves like this, then it has sukshmata in your pulse. If it has so and so feeling, it has samata, sthulata, and so on. So that was his own language, and so on. So there are so many doctors, they have so many languages, and we have tried to bring many languages together into one report card. I'm not going to go deep into depth of the report card, but basically we give Bala information, Agni information. Again, the information is available in English, Hindi, Marathi. So a common user can also read about this. So Agni is Jatar Agni, Bala is Sharira Bala or Rugna Bala. And we have published so many papers with respect to data, absolute data. So this particular paper is based on 25,000 plus data collected over the full year, January to December. You can see that 12 months are mentioned here. And the Agni part, the Agni parameter which we received, and we showed that
across months, based on this data and based on the Agni information, their average values actually move like this. So Pitta has a higher value. Most people have lower digestive fire or energy in during rainy seasons and so on. We definitely have shlokas. We observe this, but first time data is available to showcase that. Again, we took questionnaire based Prakriti and Nadi based Vikruti, and we showed various, again, bifurcation beyond just Prakritis, and we showed how different Prakritis, different Vikrutis come together to actually give different types of Agni. Because we have enormous data of 4 prahars, in the sense morning to evening late night. Of course, last 2 nights data is not available right now, but we also showed that for a particular combination of Prakriti Vikruti, how this data changes, how Agni changes and so on. Very interestingly, when we actually plotted the same data, same Agni across Hindu calendar, so you can see that this is actually Hindu calendar, and and there is a Shukla Paksha, there is a Krishna Paksha. So first 15 Tithis and next 15 Tithis, you can see that digestive values are slightly higher in Shukla Paksha. So when moon is increasing, the numbers are different. Moon is decreasing, numbers are different. Numbers increase, come down during first Ekadashi, again increase, come down second Ekadashi, various Chaturthis. So very specific data-based work and observations we have found why our people must have come up with various fastings during various seasons, various timings, various moon cycles, and so on. Again, we also give information about various Nadi Gunas, and again they show absolutely seasonal variations with respect to those. Also, they show with respect to Prakritis, Vikrutis, again with respect to moon cycles. So why few people have dry skin during a few days and so on. So we are actually able to show to people that if you are of so and so kind, and even in healthy state, you may appear different in different Ritu according to Ritucharya, and it's actually appearing with respect to data. I think Dr. Harish Patankar is here. He has a lecture tomorrow. This study we did with his students, and we showed that drinking milkshake for a few days, or drinking ginger tea for a few days, or having harbara for a few days actually has difference on us. So why diet works as a medicine, it actually changes your nadi even in healthy state, and we showed that your nadi changes, and it has correlation with various shlokas which are given in our ancient texts. Again, at MIT College, we did this experiment with respect to Surya Namaskara, and we actually showed that Nadi Bala increases across different people, different Prakritis in different ways. And so how do we really do different Yogasana, Surya Namaskar, or exercise patterns? And we have come up with some patterns out of it. The next lecture is going to be with by Dr. Tejaswini Bhale. So we did this particular experiment at Har Panchakarma Clinic, and we showed that with respect to data during how Tikshna Guna actually goes down, and so why few people should go through this particular Panchakarma treatment, which Panchakarma treatment, and so on. So we have, let me not take name, but we have sold to one wellness center, and they actually do this Nadi Pariksha. They get the report, and based on that report, they actually suggest different Panchakarma treatment or massage, or it's a different marketing game that they are doing, but it actually helps. It actually helps for the user, a common person, to understand that this particular number is different. So the doctor or the wellness center or the coach is suggesting so and so treatment, whether it's in terms of simple massage also. That user is satisfied and actually goes for this Ayurvedic treatment. We started this work with Dr. Nagendra of S. Vyasa on pre-diabetes. We have published a couple of papers. Right now, more data collection is going on. My vision is to come up with a non-invasive system specifically based on Ayurvedic Nadi
which will be non-invasively telling about various diabetes levels. So work is going on. Within a couple of years, I think we'll be able to give some clinical trials-based definite answers with respect to diabetes, hypertension, and so on. Coming to tongue, again, we launched a tongue-based app distributed to about 2,000 users. For 3 months, we checked their tongue early in the morning, and we showed that different tongues, different colors, different cracks, they actually have textures, they actually have information about the pulse, about the digestive system, sorry, and we can actually use this information. Few more projects with respect to image processing. We are working with respect to Swanguli Praman, how different proportions on your front face, side face, full body, on your hand, on your toes, and so many things can actually give more information about the person. So we are actually coming up with different technological aspects about Ashtavida Pariksha, about various shlokas, about various concepts which are given in Ayurveda, so that it becomes simple, it becomes accessible to common user, it becomes accessible to the doctors, and which helps propagating Ayurveda across the world. So we started with Nadi Tarangini, and we have come up with something called Turiya program. So it has a new so Nadi Tarangini had a 10-page report card, basically where doctor and patient talk to each other at the clinic. But we wanted to propagate this heavily, so we came up with this consumer angled service, which is basically right now is in the wellness region, which talks about weight, allergies, stress, flexibility, pain, and so on. How it happens? Thyrocare or various blood or urine sample companies basically sends an executive to our home. They collect blood sample, they collect urine sample, go back, and we receive the blood report in the evening or next day or so. So similarly, we have started in Mumbai, Pune, and Delhi with couple of doctors at the moment, where my person actually goes to people's home, take Nadi, the Nadi report comes, the full report is available to the doctor. A small report, simple numbers similar to Google Fit and so on are available to people. And then teleconsultation happens between that particular user and the doctor. And numbers are produced. They actually talk about diet, they talk about medication, medicines if required, and so on. So this is a new service that we have just launched, and those users or even doctors who are in Mumbai, Pune, Delhi should definitely experience this. It's a nominal fee of 600, 800 rupees, in which you can, a person actually comes to your home, we take your Nadi, you actually see how the graphs move around, how the report card is produced, and how ultimately it is useful for the doctor to talk to that patient with respect to this particular user. It's very easy, as Vaidya Lakshman also explained. Many times blood report happens, I mean the blood collection happens early in the morning, and people are used to that. Early in the morning, empty stomach with 12 hours of fast and so on. So this going home, collecting Nadi, creating report, and now bringing that patient to the clinic, again checking the Nadi, it's possible. So that's how digital Nadi Pariksha at home might help from the early morning empty stomach Nadi point of view. Also in the teleconsultation, in the one which is picking up so huge, Honorable Nirmala ma'am explained about how telemedicine is going to pick up in India. They have given a specific budget for the same, and I think Ayurveda doctors, Ayush, Ministry of Ayush will surely also have a complete different branch for teleconsultation, similar to Jiva Ayurveda or different companies. And I'm sure this will also pick up in the preventive and Ayurveda phase.
this digital Nadi Pariksha, we have something like 1 month course, 3 month course, where multiple times Nadi can be taken. So depending upon that, we have seen that few people have few tendencies. So it actually helps in preventive way. It's very convenient, and because it's in the app, um, the doctor can actually provide different diets, yogas, their own contents, and so on, so that it actually helps in the doctor-patient conversation. Actually, that's all from my side today. I think the most favorable time for technology in Ayurveda is now, because yoga has propagated so much in the world. I think next big thing is going to be Ayurveda. So unless we speak their language, they are not going to accept it very easily. Of course, they are going to accept it because it's ultimate truth. But I think from sustainable, accessible, and affordable kind of ecosystem that the world is generating, I think we should be pioneers. We should be coming up with our own technologies. India should be contributing. India should be creating, so that we actually show the key message of Ayurveda, that we can find out what is going wrong and we can solve that problem if at all it is going wrong. So to end, I think iPhone has disrupted the whole industry of consumers of telecommunication, of mobile industry and so on. So what he used to say is that I make my own hardware because I'm serious about my own software, because actually I'm not creating hardware, but I'm actually serious about my software. I think same case with us. We are also very serious about Ayurveda, our software, our science. And so I think we Indians should make our own hardwares, so that we tell the world how Ayurveda, how Nadi, how should be done, and how it is useful in preventive, predictive power. That's my core team. Vaidya Tejaswini is looking after the Ayurveda angle. Shruti is looking after the nutritionist part. And Parag, my friend from IIT Bombay, is basically looking into the tech part, the hardware part, the software part, and so on. So thank you so much. That's my email ID. That's my phone number. If anyone, we can of course chat at the moment, but if anyone has further questions or wants to get back to me, please note these so that we can talk later. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Really great to listen to you from just IIT student is talking about Ayurveda. It's really a pleasant thing. So thank you very much, sir, for doing for the betterment of Ayurveda also. Thank you. I think आपका पूरा मतलब full आपका जो career है, it is related with Nadi and Nadi only. Yes. Very fascinated. So I think I spent a few years with Vaidyaraj Ashok Bhatt, and that has transformed my life. The way he had, today also Vaidya Lavgankar was talking about his experiences with his father and so on. So I think I had similar experience. Of course, I'm not a Vaidya, I haven't learned, and I'm purposefully not learning because I want to make sure that different gharanas, different families, their knowledge I combine and I don't develop my own. So, but I think that experience with Vaidyaraj Bhatt has given me so much energy that I think this will go ahead. Thank you. Yes, sir. Yes, definitely, sir. Sir, can you just tell me the difference between Turiya and Nadi Tarangini? Yeah, it is the extension of Nadi Tarangini. Sure. So actually, these are two different hardwares. Nadi Tarangini we launched specifically for doctors, in which doctor holds the sensors and checks the pulse. So because the design has done in such a way that doctor is doing something similar to how ECG machine is developed, how BP machine is used, in which doctor makes the efforts. The Turiya machine uses the same sensors, same technology, but in which the user at home can do on their own, basically something similar to BP machine, AccuCheck and so on, which they can use at home.
we are using this more like a service at the moment, because our experience with respect to Turiya was slightly different. That, Turiya plus Google was making a bad impression on the users. They were doing on something on their own which we didn't want to do. So so that's why we have stopped Turiya at the moment. We'll come up with that again, with specific large content and how the users can actually read on our platform itself. Because on Google you read so much information. If pitta is increased, there's so many things which are given. I don't want user to read that pitta is increased and do something else. So that's why we are specifically right now doing only Nadi Tarangini and this at-home Nadi Pariksha, in which ultimately doctor over the video consultation again talks to the user. So Turiya is a service. Yes. Yeah. Can you just show the graph which has taken through the Nadi Tarangini, how it looks, and Sure. assess? So because let me many share young my screen generations again. are with us. So let me put this screen for a few seconds. I think someone asked about what is my email ID. So it's aniruddha@atreinnovations.com. And let me show how a typical Nadi graph looks like. So I'm just showing a simple report card which is produced. So it actually looks something like this. How Vata Pitta Kapha, I'm sorry, I've opened the patient's report card. Actually, let me open the doctor's report card. Sir, what another equipments are needed while operating this Nadi Tarangini? Sorry? What another equipments are necessary for No, operating this absolutely Nadi not. Tarangini? Absolutely. Nothing is required. And a couple of days training is sufficient to actually, read the pulse. We have got so many testimonials with respect to that it helps the patient, it helps the doctor, it has actually helped the doctors to learn manual Nadi Pariksha. So they check with Nadi Tarangini, they check manually, and they try to, visualize. And I mean, we just heard about Sarpagati or Mandagogati, that it actually jumps like a frog and it has Tikshnata and so on. So graph looks like this and I feel this. So there is some kind of visualization. So it actually helps in manual Nadi Pariksha also. So this is how different graphs look. You can see that Vata graph is something like this, Pitta graph is something like this, and Kapha is all again going similar to Pitta, but it actually has different patterns, different parameters and so on. So the complete report card looks like this. So I have tried to come up with a report card which looks similar to ECG machine, so people are familiar with something which has numbers, which has comparison with respect to previous and so on. Yeah, definitely. Dr. Sanjay sir, over to you. Any questions, doctors? You can unmute directly. I have given the option also to unmute directly. So I think it's a great opportunity to deal with. It's always great to listen to Aniruddha ji, because his journey into technology for Ayurveda is very inspiring, and probably it has led many of Ayurveda scholars to get into some kind of innovative technologies. And if you have listened to him carefully, you could understand how difficult it is to develop an indigenous product with indigenous design, which is appreciated, and which is a product which is useful. I am one of the proud user of Nadi Tarangini. For years I am using it in all my clinics, and I can really say that it is one of the best possible report you can get on Nadi Pariksha. It is very useful. Thank you, Aniruddha ji, for providing us with Nadi Tarangini, and we are looking forward for newer upgradations and newer portions from our newer, what we can say, models of Nadi Tarangini coming in future. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, dear sir. Thank you so much.
Any Namaste. questions? Yes, Dr. Mitushi? Any of Dr. Harish sir? Sir, very nice. Congratulations. And as expected, you have explained the Nadi device very nicely. Thank you. And yeah, Harish sir doesn't have questions usually. Usually I have questions for him. I go to him when I have questions and then he answers. He's a Nadi expert. Yeah, answer. Yes. thank you, Chajit sir. Also, as he said, he's a proud member for using the Nadi Tarangini, as well as sir have guided very nicely us. Aniruddha sir and me, we are always feels like connected Jivatmas working for the same goal. Okay, so I'm always happy to work with Aniruddha sir. He's very genuine person, and like for me, he is my best friend. So it is very nice to. This was my aim or goal, you can say, that I always wanted to show the Nadi as a scientific thing. It's Ayurveda is a logical science. It's not a magical science. And Aniruddha sir, having IIT Bombay person in that field, he's devoting his whole life to show only one thing, that is Nadi is the scientific thing, not a magical, it is a logical thing. And I really appreciate for this work. I am also a proud user of Nadi Tarangini device, and thank you Aniruddha sir for acknowledging the things which we have worked together to get the shlokas validation of Madhur Amla Lavan Tikta Katu Kashaya Rasas from Granthas on our Nadi Tarangini device. So that was very nice experience to work on this device too. And as you remember, we have represented the paper in WAC, World Ayush Congress in Kolkata also on this subject. So tomorrow in my lecture, I will definitely elaborate those things, Shastrokta Nadi Parikshan with the scientific meaning, and with this Nadi Tarangini device too. Okay, thank you very much, Aniruddha sir. And best luck for future journey. खूपच छान वाटलं, म्हणजे कोइन्सिडन्स खूप चांगला होता. मी पाटणकर सरांचं जस्ट बायोडेटा नाडी वैद्य म्हणून तुम्हाला बोलवलं, आणि तुमचं म्हणजे एवढं कनेक्शन माहिती नव्हतं की तुम्ही पण नाडी तरंगिणी वापरता आणि सगळं काही रिअली नाईस. मला वाटतं तुमचं पहिलाच आहे नाडी बद्दलचा या ठिकाणी पाटणकर सरांचं बहुतेक, ऍज पर माय आय जस्ट डोंट नो. नाडी परीक्षा आणि टेक्नॉलॉजी असा जर एकत्र विषय काढला तर अनिरुद्धजींना तुम्ही भारतातून बाहेर नाही काढू शकत. भारतात जेवढे टेक्नॉलॉजी मध्ये काम करणार, नाडी परीक्षेवर काम करणार जेवढे काही व्यक्ती असतील, कुठल्याही कोपऱ्यात, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साऊथ, सगळीकडे अनिरुद्धजी इज अ पार्ट ऑफ इट. देन देअर आफ्टर एव्हरीबडी एल्स. ही इज वर्किंग फ्रॉम 2004, 18 years now. It's a long time anybody can spend, and we really appreciate and thank Aniruddhaji for spending this much time on a problem which every Ayurveda student wanted to solve and had no opportunity to understand. So with this I can say, and as Harishji has very correctly appreciated, that he has worked not only on the Nadi alone, but the impact on everything else on the Nadi. And that really gives us more access to the classical understanding of Nadi. Thank you once again. Thank you so much, sir. Thank you, for sir. your Very time. nice. Any questions? Anyone? Yes, thank you, madam. सर माहित नव्हतं, खरं छान वाटलं पण. मॅडम खूप आधी नाडीची जर्नी आपण सुरू केली. 2008 पासून आपण सर्टिफिकेट कोर्सेस इन नाडी विज्ञान घेतोय, मुलांना मोटिवेट करतोय आणि नाडी शिकवतोय. म्हणजे तो एक काय म्हणूयात की आयुष्यातला एक पार्ट बनवला की नाडीचा प्रचार प्रसार झाला पाहिजे, आणि तो सायंटिफिकली झाला पाहिजे. सायंटिफिकली झाला पाहिजे याच्यासाठी अनिरुद्ध जोशी सर भेटल्यापासून त्या गोष्टीला अजून एक वेगळी उंची मिळाली असं मी म्हणेल. आणि किती क्षेत्रामध्ये तुम्ही काम करताय, मला असं वाटलं. म्हणजे मला जस्ट माहिती नव्हतं एवढे डिटेल्स मध्ये, जस्ट मी एक हे केलं होतं, पण माझं प्रिडिक्शन खूपच चांगलं निघालं, लॉजिक. येस, थँक्यू सर, थँक्यू. सो आय थिंक नो क्वेश्चन्स. थँक्यू. डॉक्टर मितुशी, आर यू जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग?
I know, like I would really love to appreciate Anirudh sir. You have successfully built a bridge between a technology and a science. Like you are able to give logics so simply that no one can say that you are not a doctor. बहुत इजी तरीके से आपने जो शुक्ल पक्ष का भी बताया और एकादशी का भी जो आपने बोला, वो सब कोई भी नहीं बता सकता कि एक आईआईटी इतना अच्छे से वो बोल सकते हैं. So really successfully you have conveyed the message. I think she is the next Thank you. generation. Dr. Thank you. Mitushi Thank is you, in Dr. final year student. Okay. So I just thought कि मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा important रहेगा ये topic. सर आप थोड़ा सा just 2 minutes में ये बता सकते हैं एकादशी और उसके बारे में, just within 2 minutes. Sure, sure. So basically, we collected the data across India, and the paper which we have published. I think maybe Dr. Tejaswini might be speaking about it in the next lecture, immediate lecture. I don't know, but let me explain very briefly that we selected only data between Maharashtra to Delhi, assuming that in general the climatic conditions will be similar in this region. That was our assumption. So we selected only this region, and in this region, whatever data came in January, February, March, April, and so on, and we published that paper. And for some reason, I was in one of the conference with respect to astrology, and they were talking about effects of a lunar cycle, moon on us, on our water body, and so on. So I just thought, let me use the same data and plot with respect to lunar cycle, and the results were exceptional. I mean, I just showed how the numbers change from Prathama, Dvitiya up to Purnima, and again back to Amavasya. But actually, and I showed only with respect to digestive fire, but you will be surprised how dryness, how Tikshna Guna, and so on actually changes with respect to the lunar cycle. And it is actually having, I mean, the world, everything is basically with respect to energy, something is, I mean, inside our bodies also there are atoms, they're revolving, and they are having effects, after all, at laws of attraction and repulsion. So everything is happening same. I mean, I think Sukshma to Sthula, we say Pindite Brahmandi. So basically, I think what we showed was the digestive fire actually increases in the as moon increases, and it reaches up to certain level for one particular Prakriti, and again comes down. It comes down during Ekadashi for two Prakritis. For third Prakriti, it doesn't have much effect. Again, it goes up, again comes down on second Ekadashi. So I think as holistically, considering the whole population, I think when we have such kind of observation across people that, you know, their digestive fire, their digestive capacity, how much calorie data I should have on different days, it was actually observed. I mean, I think it was scientifically observed over years, and then they come up with this kind of various types of fasting patterns and so on, and then they included them into our tradition, dharma, and so on, so that people will actually follow without asking much questions. But with respect to Rutucharya, Dinacharya, and this the whole structure, I think it has already been said in Ayurveda and different shlokas that this is how, if you behave, it will usually end up in healthy and happy life. I think that is all we tried to show with respect to data. Thank you. Dr. Thakur sir, please. Dr. Mahendra Thakur sir, please unmute. You can ask. Namaste sir. Thank you very much, Anirudh sir, for sharing this type of experience to our Ayurveda fraternity. I have just curious about, you have already said that in Ekadashi, the Agni Bala is a little bit decreased in your study. Similarly, in our continent like Nepal and India, I am belong to the Nepal. That's why fasting in the Sunday,
Tuesday, like these days, usually many people are doing fasting on these days. Have you studied like Ekadasi on these days? What the relation between fasting and this Nadi Pariksha? Is there So, any? yeah, You very can good please question. And we want to do that. So if any of you are willing to start the project, we'll be very happy to collaborate. During COVID period, financially, it was difficult. So actually, we had many projects in mind. We had, signed MOUs with various colleges with respect to such projects, and also especially the hormonal in teenage and so on. So, but we could not complete them at that time. But now we have restarted our journey. So we'll be very happy to collaborate with various doctors, colleges, and so on to actually collect data and observe and give database empirical findings in front of people. I mean, I think people already know. They just want to see the proof. I mean, it's not that we are reinventing anything. It's already there. We just have to give people in the language which they understand now. The way Yes. how they come up with poll. I mean, we had elections in 5 states, and how the people came with different statistics, numbers, this, that. People now understand numbers or graphs, or if we can give similar information to people, I think they will accept, and they will go to Ayurveda as first choice and not more like a second choice. I think people are already moving towards Ayurveda, but we have to increase the rate and number. Yes, sir. Thank you very And maybe much. Dr. Tejaswini will explain further in her lecture. I'm sure she must have studied based on our data, and so looking forward to the next lecture now. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, definitely. Namaste. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. So, moving forward with our next session, I would like to invite Dr. Tejaswini Bhale, madam. Dr. Tejaswini, madam has completed various degrees. I think her biodata is quite long, but in short, she has pursued a MBA, PG, PMS, diploma in yoga and Ayurveda, and she is the founder of Prakruti Ayurveda and Panchakarma Center in Pune, and she is also the consultant and this Atraya Innovatives, and I think she is the main force behind this Nadi Tarangini team or Atraya team as per the Ayurveda part. So, ma'am, looking forward with your session. Welcome. Thank you very much. Thank you very much for allowing me. And I very first of all say my thanks to Dr. Shilpa ma'am, who has invited me here to express my whatever the knowledge I have about the Nadi Pariksha, the traditional Nadi Pariksha, and how this traditional knowledge we are transferring into the today's language of technology. So my topic is today is bridging between the first 2 sessions, which is first the traditional Nadi, which we learned from Vaidya Lakshman sir, and the second part which is covered by Anirudh Joshi sir about the technology. So let me share my screen, and also this is a very good initiative taken by Nadi Prabodhini to have this lecture series about Nadi Pariksha. This is a very crucial part. We are all having Nadi Pariksha learned from our gurus. So very first of all, I will salute to my gurus, because of whom I could learn Nadi Pariksha. I could practice it in my daily life. Because of the practice and all the things which discussed in the first session, I could diagnose the Vyadhi Avastha and Vyadhi and the Arishta Lakshana in my own practice also. And also got this opportunity to work with the modern technology, which we have started the journey 6 years ago with Atre Innovations and Dr. Anirudh. So this is a great opportunity for me to work in both the fields of Ayurveda and tech. So let me allow to share my screen. Ma'am, can I share my screen? Yes, ma'am. Yes, you can. Okay, great. Thank you. Okay.
As the introduction is given by Dr. Shilpa ma'am, I have done my graduation and post graduation from Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune, and that is my place where I learned Ayurved deeply. I could learn Nadi Pariksha from my gurus over there, and in their private practice also, I used to go and sit along with them, and I learned how he is examining the patient, what the records he is marking on the case paper, and with that observations, I could do this Nadi Pariksha. So along with that, I have done my studies in yoga also, because we know that the mind and body should go in a harmony. And for Nadi Pariksha, we need the total calmness, total focus, total concentration, and yoga is there to help us. So along with that, I am proud with this practice of yoga also. Not only the study, but practice is also important. And very importantly, I did the marketing, MBA in marketing, which was a new dimension to my life, which I did around 6-7 years ago, because I want to do something with the new fields of education. So with the marketing things, I could work with Atreya for the development and research of these products, Nadi Taringiri and now Turiya. So this is the way my studies and knowledge are helping me in my life. So we know all about this. Let me hide everything. Okay. So all of us know what is the traditional way of Nadi Pariksha. Vaidya Lakshman sir also explained us very well that at which place we do the Nadi Pariksha with which three fingers. We are having all the references from Yog Ratnakar, Sharangdar Samhita. For me, the references, or I follow the Ravankrut Nadi Vidyan very importantly. Of course, there is practice is important, but the more and more learning and getting knowledge from our traditional books is also important for the Nadi Pariksha, because there are the hidden hints are there in all these texts. So we should learn, we should read all these ancient texts very carefully and with a regular practice, that I will suggest to the new Vaidyas over here present in this webinar. So we know that the Grantha Adhyayan is very important. That's what I am saying right now. So one should go through all the Grantha, not only the Bruhattari, Laghuttari also. And for Nadi Pariksha, you should go to the Yog Ratnagar, Sharandhar and Ravankrut Nadi Vidyan. Guru is always important. So Guru Upadesh is very much needed. With Guru only you can learn this. We are having the traditions. We are the families in India who are doing the Nadi Pariksha. We are lucky that in Maharashtra, and now I'm more lucky because in Pune, I'm having more Nadi Vaidya present and I could learn from them. And the third one is the Swanubhav. So self-experience. So daily we have to examine the Nadi of our own with different timings, with different consuming different foods in different moods also, because we have to check our mental state. We can find out, we can diagnose the mental state also from Nadi. We can find out stress factors from Nadi Pariksha. So we have to do the Swa Nadi Pariksha, and also for the patient and also for the Swastha Manusha. So we have to do this Vanubhav, the Anubhav, and every Nadi when you are feeling or you are examining the patient, you should write down their notes. How I am feeling the Nadi today, whether it is a Guru Nadi, whether it is a Sukshma Nadi, or whether it is having Ushna Guna present, whether the Nadi is having Avarana, which Vyadhi is there. So we have to, of course, the dosha and the dhatu also comes. So we have to write down all these notes daily in our book, and then only you can do learn Nadi more and more. Okay, these are some references. What are the synonyms of Nadi that you may all know? We can say it's Nayu, we can say it's Dhamani. Okay. Also, very importantly, it is also known as Himsra because it shows the Arishta Lakshana. Doctor, in the first lecture, Vaidya Lakshman sir also explained about the Arishta Lakshana and Asadhya Lakshana. That is very important in our daily practice, in our clinical practice, or in any emergencies. We can diagnose this Nadi. So
whatever the Lakshana he told, that whether the Nadi is now moving very fast, in between it becomes slow, sometimes it is palpable, sometimes it is not, it is with irregular rhythm. I'm using all these modern words also because today my topic is combining both the sciences. So with these things, we can find out the Arishta Nadi. So that's why we called it as Himsta, and that is very important part that we have to do in our daily learnings and practices. Okay. Everyone we know about Ayurveda. What is Ayurveda? Why Nadi is having the importance? Because it is not showing you only the current state of disease, but it is also works as a predictive. So we can predict any disease, any deformities, or any imbalances in the Vata, Pitta, Kapha, in the Dhatu, in the organ system, and we can diagnose it early and we can cure it. So we know that Purva Rupam Jayet Dosha. If we can diagnose it in the early stage, the success rate is more. So that's why Nadi Pariksha is very important. Very importantly, it is non-invasive technique. So no need of any incision or any blood sample. And don't very efficiently we can do it. There is no also patient don't have to pay much money for the Nadi Pariksha. So we can do this Nadi Pariksha for each and every class of the society. So here it works as the predictive. Then comes the next part, which is the diagnosis, that is Nidana. And in Nidana, we will do different, we will have the different dimensions of Nadi Pariksha, different dimensions of Vyadhi Nidan that I will come to in my next slide. Also, we can learn Nadi for the different Shatkriya Kal, that is the Dosha Avastha, whether it is in a Sanchaya Avastha, Prakop Avastha, Prasar, Stana Samshraya, Vyakti, and the Bhed, we know that now Vyadhi is completely formed. Dr. Anirudh Joshi just explained about our research work in the previous slides that we learned about the Tikshna Guna through the during the Virechan Chikitsa. So how this Tikshna Guna increases, and so this Tikshna Guna, the different gunas are palpable in the Nadi. So as per that, we can find out this kala, this states of the dosha, and we can fix our treatment or the chikitsa part. This is also very important, that Nidan Panchak. When we diagnose any disease or we want to give any treatment, the very important part comes, and what we learned in our studies also, in our graduation part also, first is the Nidana. So we know the Hetu, Purvaru, Roop, Samprapti, and Upashay. So each and every step, at the every stage, the Nadi is different. Okay, we can find out Hetu from the Nadi Pariksha, like which ahar, vihar, or the mental stress, or the any anxiety or depression issues are there, or any positive factors are there. Those also we can find out from the Nadi Pariksha. That's why Hetu Jnana is possible through Nadi. Of course, lots of practice, lots of learning process is important. So everyone should do it daily basis. So you can also find out this Hetu without asking to the patient also. Purva Rupa, Purva Rup, just now I have explained about this, that the early diagnosis is important. In the Purva Rup only we can diagnose the coming disease. So Purva Rup is important. We can do Nadi Pariksha, we can diagnose the disease over here. Rupa, the symptoms are present. Without asking a patient, with the Nadi, we can do the diagnosis. Of course, the symptoms or the whatever the case study we do, that is also a marking thing that of course we are going in a right direction. Patient is also having the similar type of complaints present right now, and our Nadi is also saying the same thing. Samprapti. Samprapti is very important because with the Samprapti, the treatment, the chikitsa changes. It is not, of course, all of you are the Ayurveda Vaidya, so you know very well that we are not going to give the whole treatment, whatever the treatment part is there, in a similar way. With this Samprapti, with this Avastha, anything in the Avaran Chikitsa and everything is given. Along with this Avastha, we will change our treatment part. So that's why, first of all, the diagnosis should be best. Okay. And the Upashay. If the person is saying now there are no health complaints, the person is having the
the healthy state of mind and body. That Ma'am, Nadi. just a minute. Slide change नहीं हो रही शायद. Your slides are not moving. Just check, please. Nadi Pariksha is the slide. Could you see the Nidan Panchaka? No, ma'am. Just the first slide is there. First one is there. Oh my God. Okay, let me check. Could you see the ancient science of wisdom? No. I think just first one is there. Let me. Oh. Just once again So check, now please. Yeah. I will share it again. Yes. So I'm on 5th slide and still first slide is visible. That's Yeah. okay. Now this is first slide, ma'am, and Yes. now I'm re-sharing. Could you see the second one? No. No. All of you couldn't see? Tejaswini, you have to go into so right now you are more like a reviewer on your own slideshow. Come out of it. Yes. क्लोज करून मॅडम परत एकदा शेअर करा आणि मला असं वाटतं की तुम्ही स्लाइड शो न करताना एक एक पुढे घ्या मॅक्झिमाइज करून म्हणजे व्यवस्थित होईल. आहे त्या फॉर्मॅट मध्येच खाली खाली जा. दिसतंय आता? तेच. नाही काहीच नाही, तो फर्स्ट स्लाइडच आहे. ओ माय गॉड. ओके. स्टॉप शेअरिंग करते आणि परत दिसते अनिरुद्ध? आता झालं मॅडम. येस झाले आता. नाडी विज्ञान असं आले सेकंड. असंच कर, शेअर करूच नकोस. अच्छा. ओके. Yeah, great. Thank you. So in this tech field, Anirudh is always helping me. Okay, so we are here for discussing about the Nadi Pariksha and the Nidan Panchak, how Nadi Pariksha is important for in the stages of Nidan Panchak that I have explained just now. All of us know about the Ashtavida Pariksha. Nadi is the very first given and which is the integral part of our diagnosis that we are discussing today. And of course, it is there because we don't have to rely on anyone and our own diagnosis is very firm and we have to be very much treatment. Just now I have written in this Ashtavida Pariksha about the Jiva also as a diagnostic tool. About the diagnostic tool, that is because along with Nadi Pariksha from our whatever we did the studies in our graduation, we learned about the Jiva Pariksha, how to find out Samata, Niramata from Jiva. But there are also many different dimensions of Jiva that also very important to learn and which is also very helpful in our diagnostic methods in our daily practices. So let's now come to I hope the slides are visible and now let's come to the next point, that is the site of Nadi Pariksha. We already saw the shloka shared by Dr. Lakshman and there are the 8 places and as we are having the 2 similar sides of it, so we are having the 16 places defined for the Nadi Pariksha. Very importantly, we do for the convenience and just to put all the 3 fingers nicely to find out Vata, Pitta and Kapha. That is the Angushta Moola. That's why on the pulse diagnosis or the Nadi Pariksha we do at this place. So the pulse is usually felt at the wrist over the radial artery. And as it is a superficial position and whatever the anatomical structure is there at the radial artery, that the bones are there, muscles are there. So why we feel Nadi different at 3 different locations? This is the reason behind that, because of course the blood flow is there, the dosha avastha is there, but also because of the part which is below the Nadi or the surrounding the Nadi, that is the bones, the styloid process,
of the radius, the muscular structure. That also helps us to feel that nadi in a different way, and we can do the diagnosis very well. So we know the nadi gatis, or there are the three nadi gatis. We talk mainly about vata, pitta, kapha in a sarpa, manduka, and hamsa way. So let's come to that point later. Now, when we are going to do nadi pariksha, of course, in our text it is given that early in the morning, empty stomach nadi pariksha should happen. But as we know, because of the our clinic timings or whatever the convenience is there, we can do nadi pariksha at any time. But at that time, we have to consider few things in our mind. The first of all is the prakriti of that person, which you can diagnose from the nadi pariksha also, or you can diagnose it with the examination, the external examination of the patient, their talking patterns, or the questionnaire based nadi pariksha, prakriti pariksha. So we have to consider the prakriti, we have to consider the kala, that is which prahar of the day we are doing the nadi pariksha. We all know the 6 prahar of the day, kapha, pitta, vata in the morning session, and again the kapha, pitta, vata in the evening or night session. So that also influences the nadi. So we have to consider those things while doing nadi pariksha. Very importantly, the rutu, because as per rutu, we know that how the vata, pitta, kapha, the sanchay or the prakop happens, how the bala and agni changes as per the rutu. So that's why we have to consider the prahar or the rutu also. Then next comes is the vaya, because again, we know that as per the vaya, the balya avastha, the madhyam and the vruddha avastha, there is the influence of kapha, pitta and vata respectively. So we have to consider these things also in our mind. Next comes is the desha, at which place, whether it is Anup, Sadharan or Jangal Pradesh, as per that which the dosha is predominant at that time. We have to consider these things. All these calculations should go in our mind when we are touching the, or we are palpating the nadi. Bhojan kal. This is also very important. Sometimes people come to us after breakfast or after any snacks or after lunch time. So what is the avastha of that pitta or the agni at that time? Whether this tikshnata is because of annapachan, or this tikshnata is because of the provoke or the pitta prakop, that we have to do the differential diagnosis. That's why we have to consider all these things in our mind. Vyayam kal, whether the person is coming to you after doing any gym, or whether it is coming to you after taking a good nap or a sleep or in a hurry. So as per that also, the vata, pitta, kapha level, the nadi gati, the avastha of the dosha changes. Very importantly, then comes the nidra. Now nowadays people are having many issues with sleep disorders, or they don't sleep in a night. That's why also there is the changes in the nadi parameters. So when you are doing nadi pariksha, it is not just to put the fingers at the 3 locations of vat, pitta, kapha, and just to diagnose these levels of 3 dosha, or their gati, or their avastha, or their whether they are superficially present or they are very sukshma. We have to consider all these things. Then only you can do the correct nadi analysis or the nadi pariksha, and you can come to a correct diagnosis. Daily in my practice, I do consider all these parameters, because as I said, this is from our learning, our new experiences from our text. We have to learn more and more. And if you go deeper and deeper in this way, then you can go towards the correct diagnosis through nadi pariksha. Okay, so this is a very important part that you have to learn, and you have to consider, compare all these parameters with the current nadi, whether the nadi is having hamsagati and this is the kala of pitta, then how nadi will change at the pitta side or at kapha side. So different things. Again, you in the first lecture, you know that we have made the 5 points for the all 5 dosha, upadosha. So we have to consider those things also when we are going to do the dosha and upadosha. Also for the dhatu, we have to consider this. Now I do for the dhatu parikshan,
I make again the three parts of the finger, and for the from the kapha finger, kapha, pitta, and vata. So kapha finger, I will have rasa, rakta. Pitta will have mamsa, meda. Then vata will have asti and majja. And all these three at the center part will have shukra. So in that way, I do the dhatu parikshan through nadi. Also, I do the nadi pariksha. Also, I do the nadi pariksha in on both the hands. In our text, it is written right and left for male and female. But I do for the both the hands. I follow that on the left hand there are different organ systems. On right hand there are different organ systems. What we called it as a strotasa, and also mind. So from nadi, from the left hand or the right hand, I could find out the stress nadi, I can find out the hypertension nadi, diabetic nadi, thyroid nadi, but it also with the practice and all these things. So you have to do nadi pariksha for both the hands. Don't do only for right hand or left hand. Okay, that will give you more and more precise diagnosis. Now there are the nadi guna. We know the Vimshati guna, the 20 pairs of guna present. And the same guna, they are present in the nadi also. All are not described, but whatever are described in nadi, so what we can feel, they are shita, ushna, nigdha, ruksha, then sthulata, sukshmata, guru, laghu, mrudu, and kathin. Okay, and there are different diseases in which we can palpate such a nadi. So for example, when there is a shita nadi, there is a kapha vruddhi, ama, ajirana, mandagni, or atisar is there. When there is ushna, it is pitta vruddhi, jvara, krodha, rakta pitta. When nadi is having snigdhata, which is because of again ama or madhumeha or rasadushti or medoro, we have to do these things not only with vat pitta kapha, but as I said, for the upadosha also, for the dhatu also at that point, at that finger. Now, a very simple trick I can tell you. What are the guna present? Sorry, sorry, any disturbance? Should I continue? Okay. So I will give you a simple trick. We know the guna for vata, pitta, and kapha. So we have to correlate this guna with that dosha, and we can find out at that particular location in the beginning. So whatever the shita guna is there, we can palpate at the kapha and vata. Ushna guna only at pitta location. Snigdha guna at kapha location. Rukshata at vata. So in that way, we can do the in the beginning you can do such type of nadi pariksha to learn that particular guna at that site and can find out the vitiation of the dosha. This is a long list, so please or later on I can share with you. These all are the references which I have learned from the text, ancient texts, and different nadi books. So these are there, and of course I do find out all these things in my daily clinical practice also. Okay. Now we know about the nadi gati. We learned about this. We know these words. So vata is having the sarpagati like a snake or jalauka gati. But when the pitta is having manduka or the crow, that is kaka. Kapha is having hansa or the pigeon. Okay. Sannipatik is having all the three gatis present, but with say regularities or irregularities in that. Now, when vata is there, the vata is chalaguna. So that nadi comes with is very irregular, or sometimes it is very rapid also. Pitta is having the rapid gati, and kapha is having the manda guna. So slow nadi you can feel. The three fingers, different nadi you can feel. Of course, swastha person nadi and the diseased person, vyadhigrasta person, patient will have different nadis at this location. Now about the Agni. Agni is very important thing, and to find out the state of the Agni, whether the Agni is Dipta or Manda or it is having Vishamagni, we can do the Nadi Pariksha at that location. Of course, we can do in the beginning at the Pitta location. So the Nadi will be Diptagni, the Nadi will be Laghu, and very Tikshna or Tivra Gati will be there. Mandagni, the Nadi will be Guru, and Manda, slow moving will be there. The next comes is the bala. Bala is very important to find out bala of the vyadhi or bala of the rugna.
So we have to differentiate those things through Nadi Pariksha, whether the Rugna Bala is strong and whether the Vyadhi Bala is strong. That we can palpate. But I'll do it. So Dhatu there are some voices are coming. Could you mute yourself? So Dhatu Kshaya, the Nadi will be Durbala or the Manda Nadi will be there. And in the Balavan, whether the dosha is Balwan or the Vyadhi or the Rugna is Balwan, we have to find out as per the Prakruti. We have to give the predominance as per their Prakruti, compare Prakruti and Vikruti, then give more weightage to that dosha and find out the Bala. Okay, so in that way we have to differential diagnosis. I'm using this word again and again because diagnosis is there, but we have to come to a correct point or the pointer of the this Nadi analysis, which is differential. मैं खिला दूं? इकट्ठी खिला दूं क्या? Coming to next, that is Nadi Gati. So if there is a Jwara, we learned that in Jwara, the Nadi is very Vegavati, Nadi is Tivra, Tikshna. But again, in Charak, we know that there are different types of Jwara are given, Vataja, Pittaja, Kafaja. So as per that, the Gati and the Sparsha of the Nadi changes. When it is a Vata Jwara, it is Vegavati, Shita and Laghu. When it is Pittaja Jwara, it is Vegavati, but Ushna and Spurana will be there, palpitation will be there. Kafaja Jwara, it is a Manda, Shita and Gambhira Nadi. So Jwara is also we have to do the differential diagnosis because we have to select the proper herb for that. Okay. Manasa Bhav, which is again, I'm very keen and I do this practice for the Manas Bhav through Nadi Pariksha. And last 2 years and after pandemic, this rate is more increased because the stress, anxiety, depression issues are increasing, and this is becoming the next cancer. So this Manas Bhav we can find out through Nadi Pariksha, and we have to learn about it. So when there is a Kama, Shoka or Bhaya, we know this word, Sanskrit word, the Bala will be less and Vata Prakop will be there. So irregular Gati and Shita Guna will be present at that time. Krodha is aggravating or provoking the Pitta. So Tikshna, Tivra Gati and Ushna Nadi will be there. When there is Chinta, and we know that Chintanam Chati Chintana Prasavayini Dushyanti. So this is the main causative factor of all the dhatus to get vitiated. So at that time, the Nadi will be Manda or Kshina. Okay. I do right hand Nadi Pariksha to learn about this Manas Bhav in both the genders. Okay. On the right hand side, right hand Nadi, you can learn more and more about this Manas Bhav in both the genders. Okay. And as we know that Garbhini Nadi, so my observation by my whatever I do the Nadi Pariksha for the Garbhini as I work for the woman's health mainly. So I feel that of course the Nadi is Guru at that time, and I could feel that there are whatever the pulse rate is there, they are showing the as we know it is written as the Daurudha, Dvi Rudaya are present. So we can differentiate, we can palpate with more and more concentration with that Garbhini Nadi is present in that way. Okay. Now this is all is about our ancient knowledge about the Nadi Pariksha, how to do it, when to do it, which things we have to consider. Those all I have shared about the Gati, about the Vyadhi. And of course, you might feel that this is very deeper and deeper. But of course, you have to start with this because many students are present over here. And with few years, you can come to this level that you can diagnose it in a proper way. Okay. I'm not a completely learned person about Nadi Pariksha, of course. I am also learning for now last 20 years Nadi Pariksha. But with more and more practice and experience, I could diagnose all these things. I could say that, okay, this is my diagnosis through the Nadi, and that needs more and more practice. So I wish that all of you will start observing and just learning the Nadi in different ways. Okay. So now let's come to the next part because I'm today going to talk about the ancient Nadi Pariksha science
which meets with the technology. And that's why I am here as a third speaker, because both the speakers have covered the ancient part also, the modern part also, and now how this ancient nadi, which we can palpate, how we can see it, how we can view it through the nadi machine or the nadi graphs. Okay. So this is the main confluence of the key of this topic is the ancient science, the modern medical science, and the technology should come together, which is also a big dream, and which is a big thing which is said by our respected Prime Minister Modi ji, and we are moving towards it with our products, and we can show you the nadi patterns through our nadi graphs. So this slide you have already seen in Dr. Joshi's presentation, that how we do the nadi pariksha in a traditional way, and this is the modern way of doing nadi pariksha. This is our nadi taringiri machine through which we capture the nadi, the graphs we analyze, because what I palpate and what I can see in the screen, that things we match, and we come to the report card part, which you have already seen in a different guna, Agni, Bala, and Manas Bhav way. And there we have also give you the diagnosis, which symptoms are present, to which conditions they are prone to. That is also everything given in the that report card. Okay. So this is the journey started, as Dr. Doshi already said in at the launch how it was there, and today we are having more than 1 lakh patients data, and through which we have published many papers in the national and international journals. In the last week only, our one more paper is published in the International Research Journal of Ayurveda and Yoga, and which was based on the Nadi parameters or the Nadi Guna, how there are changes in the different ritus, and as per that our ritucharya should be we should change it to get more and more benefits. Okay, so I will skip these things and we'll come to the nadi graphs. So when you feel the nadi, of course you have to make more and more concentration, and you can really feel such types of beats, you can feel such types of movements, like it is given in the ancient language of Manduka or Sarpagati or Hamsagati, and you can see it here in that way. Okay, so try to now palpate and visualize. So here, this journey with new tech has started, that what we are palpating at this point at the radial artery, at our Manibandha Sandhi, how it will look. Okay, so when the pressure is there, how it is digitalized, how the bala is more, how the nadi is showing more and more jumping pattern, whether the nadi is having sthulata or sukshmata or guruta, or whether the nadi is having tikshna guna. So with the less pressure, how nadi will appear. So that's why we do nadi pariksha first superficially, then we do it more and more gambhira. We try to find out at that place. So in that way, with the low pressure, with the high pressure, we can palpate nadi and we can visualize it here also. Okay, this is the double beat nadi, heartbeat, how the heartbeats are going, how this vata, pitta, kapha are moving, whether they are completing their jump or in between they are starting with their another jump. In that way, we can find out the nadi gati. And for that reason, we are having this thing, whatever the Hamsa Gati is there, or Manduk Gati, or the Jalauka Gati, which I feel that Jalauka Gati is there, where there is a Pitta and Rakta Dushti. And when the Vata is vitiated, Vata is also associated with that, the Jalauka Gati comes. Many subbeats are there, so Nadi becomes more and more Sukshma and Katrina at this point. We know this, just now we saw this, and we know this graph of a graph, which is a PTVD. So percussion wave, a tidal wave, valley, and a dichrotic storm. So in that way, we learn the nadi in the PTVD pattern. So let's come to this thing. When a person is happy, okay, we know that how the nadi will change. The pulse or the nadi is very steady. So you will have the regularity in the nadi.
that we saw in the previous slides also. The nadi will be more and more regular with the same gati. If there is worry, fear, sorrow, or disgust, the pulse will be weak. So bala comes over here. In the state of poor digestive fire, that is mandagni, the pulse becomes slow and low in volume. That means there will be laghuta. Laghuta will be there, but that laghuta or the guru guna, because of armor, is different, and the nadi is having more and more uh, less type of armor and moving forward. That how it will work. So in the agni is there, the nadi will be laghu and nirama, but when there is a poor digestion, the nadi will be guru and manda. So in a hungry person, when there is a kshudha, the nadi is an inconsistent. That's why we have to check the nadi before any meals or after any meals. There is inconsistency in the rate, rhythm, and volume. In the armor present, the nadi becomes guru and sthula, that we know. So in this way here, the different graphs are visible. Now just going towards the tech part, that what the words they use as a time domain, as a frequency domain, as our work as a akruti. So in the time domain, they work with the depth, intensity, amplitude, speed, frequency, rhythm, length, their shape, the quantity or the texture, width and volume. And as per that, our language, that is Sarpa, Manduka and Hamsagati comes. And here we can collaborate both the things. This is the thing, like a snake, the nadi is moving, and the similar pattern is visible over here, that how this blood is flowing through it and how it looks as a sarpagati. Okay, so in that way we can know about the nadi patterns. This thing you have already seen about our report cards, which we give in the nadi taringini thing. This is the thing which Dr. Doshi already shared with you, how the guna changes in the process of virechan. So this is the most, I will suggest that to learn nadi as a crash course, one should do the nadi pariksha when we are doing any shodhan chikitsa. Because within that 4 to 5 days, the dosha sanchay, that prakop, that prasar, that whatever the shodhan comes, and again the swastha nadi comes. At that time, how the agni is changing, how the nadi is becoming sthula. So with that, this is the particular period in which if you palpate, if you learn the nadi, you could find out more and more variations. So this is the best time to learn the nadi when you are doing any Vaman or Virechan or Basti Chikitsa. Of course, Basti will go for 8 or 15 days, but for Vaman and Virechan, you can find out these things on a daily basis. Okay. So this paper we have published, how the Nadi Guna changes during Virechan, and how here we have here calculated the Tikshna Guna of Pitta. And you can see that how this Tikshna Guna is on the day 4, 1, 2, 3, 4, 5, the days, how the with the Snehapan, how this Tikshna Guna is increasing, decreasing, and after Shodhan it is becoming 0. Okay. This thing will, of course, about the diet that Dr. Patankar will cover about it. This thing is very interesting about Agni, and just now, as I mentioned, we have find out with more and more statistical analysis and published this paper that how the nadi changes during the different rutus, and that also matches with our ancient texts, the references given in our ancient texts, and that's why the rutucharya is very important. That when to do which type of exercise, ahar, vihar, nidra, which type of food we should consume as per the avastha of the dosha, that we could find out through the nadi pariksha. This is also very interesting. As I mentioned, we have to consider the prahar, we have to consider vaya, then desha, kala, prakruti. This is how the nadi changes as per the prahar. So here the pitta prakruti and vata vikruti person is here. And you can see that in the prahar, in the first prahar, how the pitta prakruti person agni is from lower side, it is increasing. In the second prahar, which is pitta, it is at the highest side. Again in the evening time, it lowers down.
So this is in this way the Agni also changes, and we have to consider this thing. This thing also very interesting and also discussed in the previous lecture, how the Agni changes from the in the Shukla Paksha and Krishna Paksha, and at the time of Ekadashi the Agni is on lower side, and that's why our ancient things or our rituals are there, that we do fasting, we do upavas at that time, the Ekadashi, because already Agni is on lower side. We should do fast, we should do upavas to balance that Agni, not to vitiate it. Okay, but the ahar should be lagu. Okay, so as I said, yoga is also very important. We did some research with the Surya Namaskar, and the bala pattern increases with the Surya Namaskar. That bala, that the sthulata or the bala of the nadi changes with these students we observed at the MIT college, and we published this paper, that how the bala changes with the vyayama. Okay, so this all we did our research through the Ayurveda in our daily practices, and the same thing we could find out through the tech, through this visualization of nadi graphs through Nadi Taringani. And we are having now the next thing which we introduced as a Turiya. Right now we are working it as an at-home Nadi Vaidya. So as a doctor goes to a patient's home for the visit, they do the BP testing and all. But for the Ayurveda Vaidya, the Nadi Pariksha is our diagnostic tool, which you can get the Nadi analysis to the patient, and you can diagnose it in a very well way when we do the Nadi Pariksha at their homes also. So we are having all these things through the Turiya Wellness platform, and we are now continuing with Nadi Taringedi and at-home service for the Turiya. So I hope I have covered the points which are there from the ancient part of Nadi, because the first lecture was very awesome. They explained us all the things, but my approach is very much practical, that what I do in a daily practice and what I observe with my patients, that I try to explain in this lecture. And of course, working with the Nadi Taringedi, how this, my clinical knowledge, I can incorporate with the technology part, and we can elaborate it, we can explain it in a more and more good way to help the Vaidya for the diagnosis, for to learn the Nadi also. So thank you very much for giving me this opportunity to speak in front of all the dignitaries, all the Nadi experts, the acharyas present over here. And I once again thank you all of you. If any queries, most welcome. Thank you, ma'am. Really great. It's really a challenging job to develop such a technology with our tradition or with our principles. Really great. So one question is there. Dr. Naresh ji is asking about the Guru Nadi. Okay. How do you exactly explain Guru Nadi? Okay. So Guru Nadi, as we can say, Guru, as in the beginning stage, I just mentioned that Guru is the guna of Kapadosha. Okay. So at that site also we can feel first the Guru Guna, whether it is present at the Kapha site. Then of with 3 fingers, of course we move 3 fingers alternately, and we can find out that the Nadi is becoming now stula. You can palpate it very easily. The gati of the Nadi becomes manda. So when you feel the jerk of the Nadi, that will have less bala. So that Nadi will, we can say that it is having Guruta present at that site. If it is at Kapha location, the Guru Nadi will show different symptoms like alasya or the sthaulya, or going towards madhumeha. If it is at Pitta location, it will show you different symptoms with more and more samada present in the digestive tract, which is with the anaha, admana, which is with the malavarodha. At the kapha location, at the vata location, which is not a guna of vata dosha, but the nadi will, you will not feel much changes over here of the Guru Nadi. So that's why at the kapha location and at the pitta location, you can palpate in a correct way, and you can find out this Guru Nadi.
I hope I answered your question. Okay. Yes, ma'am. Any more questions, doctors, please? Madam, just can you elaborate the things like Ayurvedic, how you manage the things with this app or this technique? It is like input method of programming by using such a software. Actually, all the programming part or the tech part is by Dr. Anirudh Joshi. My part is to give the intelligence to this product. So as I mentioned, whatever the observations are there in my daily clinical practice, which I have learned from my college, my guru, with my daily things. And the very importantly, patient is our best guru, because patient is giving all these symptoms, all these nadi things to us to learn. And with those things and observations and grasping all these things, I could find out that this nadi is related with these types of disorders. Not only the mention in the text, but also now different diseases are coming. We give them a different name. That disease I can diagnose with this nadi parameters. And of course, in college time, of course, when I was in I remember that in second year of the BMS, I used to go to Vaidya's clinic for the practice. I'm not mentioning their name because that was my guru's ajna, that always don't mention your guru's name when you are expressing yourself. So whatever the best things are here is because of my guru, and whatever the mishaps happened or the misdiagnosis happened is because of my errors that I consider. So at that time, it always come to my mind that okay, Nadi Pariksha was a fantasy at that time for everyone. But is there like ECG? I am having a medical background, so I know ECG from my childhood. So always I feel that whether this Nadi we can see, whether we can, as I'm feeling it, should I explain it to other people how it looks? Because in subtext only few diagrams are given. But of course, this is a destiny, I will say. I come up, I miss, I have this opportunity to work with Atreya and Dr. Anirudh, that I could fulfill my dream that this Nadi, this traditional Nadi will look like this. So with the practice only, I will say, with the more and more learnings of our ancient texts, and Tarajan Hospital was a great place to learn Nadi and to learn more and more and diagnosis and treatment part over there. That's the thing that I could do all this bridging between the Ayurveda and the tech side. Definitely, ma'am. Definitely. Great doing you all, your team also. एज के हिसाब से कुछ मैडम डिफरेंस आएगा जब हम लोग इस ऐप का यूज करेंगे when we are using this software? Is there any age restrictions? Okay, if you are asking about the software or our device, we have specifically mentioned that our device is for above 16 years. Okay, because all these sensors should be placed over there at the correct place. When we are doing with the fingers, there is no problem, that because we can feel with different fingers at one place, second place, third place. But for this device, we suggest that when a completely grown kid is there, say at the age of 16, when the bones are completely formed, we can do Nadi Pariksha with Nadi Taringidi or Turya. Okay, ma'am. Yeah. Okay. So yes. I must say that there is always a fantasy about the Nadi Pariksha, and addition to that, it comes with this Nadi machine also. So I must say that everyone should see, everyone should experience Nadi Pariksha through Nadi Taringani also. Check the report cards. So you will get it as a book only, that how the diagnosis part comes. Of course, we are not giving any treatment parts. We are giving the lifestyle corrections with Ahar, Vihar and Yoga in Nadi Taringani. But that is most important thing which we do as Ayurveda Vaidya, to correct their lifestyle along with our treatment. So I wish that all of you will check our device, our machine and take. Yeah, definitely. So thank you very much. I hope there are more questions from the doctors. So
आज का ये जो सेशन था हमारे, आज हमने 3 सेशन कंप्लीट किए हैं, तो आज यही पर हम लोग रुकते हैं। और कल आई थिंक कि नाड़ी प्रबोधिनी का आज का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा। जैसे मैम ने बताया शुरू में ही कि प्राचीन, अर्वाचीन और आपने एक मध्य भाग को भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया। सो डेफिनेटली इट्स रियली ग्रेट। सो टुमारो सवेरे 10 बजे से हमारा ये सत्र स्टार्ट होगा, जिसमें फिर से क्लिनिकल कुछ ट्रेड्स भी हम लोग पेश करेंगे, जैसे कि स्त्री रोगों के ऊपर एक सेशन होगा, फिर जनरल प्रैक्टिस में नाड़ी परीक्षा कैसे करें। इसके साथ हम लोग कल एक, मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग दिस पेपर प्रेजेंटेशन ऑन नाड़ी परीक्षा, which is exclusively only about the nadi and the cardiovascular system or pulse. So it will be really great to listen all the doctors. So I thankful to all the viewers, readers, doctors who are present over here and who are watching this show on the Facebook page of Ayush Darpan Journal. Thank you very much, respected Dr. Acharya sir, our co-organizer Dr. Sanjay Kumar sir, Dr. Joshi sir, Dr. Aniruddha Joshi sir, Dr. Tejaswini ma'am, Dr. Lakshman Laugankar sir, all the viewers. So thank you very much. कल मिलते हैं सवेरे 10 बजे with the same link. Okay ma'am, thank you very much. I think one more question is there from Dr. Gyanendra Sarji. Just we'll have one question. Yes. If this machine gives the same results as you yourself palpate the nadi, I will say yes. Up to 70 to 80%, of course, yes, it is giving the same results, which I do the nadi pariksha and what the machine is giving the results. So I will say yes to this answer. Yeah. Yes, ma'am, definitely. So thank you very much. Thank you all. Shubharatri. Namaskar.